सशक्तिकरण विषय पर आयोजित किया गया है। हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ममंग देई जी प्रख्यात अंग्रेजी लेखिका मौजूद हैं और इस सत्र में अध्यक्षता कर रही हैं बांग्ला की प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती अनीता अग्निहोत्री जी। मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव से अनुरोध करूंगा कि दोनों को मंच पर ले आएं। मित्रों, साहित्य से सृजनात्मकता का रिश्ता है। साहित्य को सृजनात्मक कला कहा जाता है और ऐसे इसका तो कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यह माना जाता है, एक सामान्य एक सोच है कि शायद प्रथम साहित्य रचना जो है महिलाओं के द्वारा ही की गई होगी, बच्चों को लोरी सुनाते हुए या फिर अपने दुख दर्दों को जाहिर करते हुए। कश्मीरी भाषा में तो लल देव जी पहली कवयित्री हैं ही। इसी तरह से इस तरह के बहुत से ये हैं जो वाचिक परंपरा में जो लोकगीत हमारे पास आते हैं, तो माना जाता है कि अधिकतर लोकगीतों की रचना संभवतः स्त्री रचनाकारों ने ही की होगी। और निश्चित रूप से यदि साहित्य से रचनात्मकता का इस तरह का जुड़ाव है महिलाओं का, तो साहित्य के माध्यम से यदि कहीं स्त्रियां समाज में या किन्हीं कार्य क्षेत्रों में उनके प्रति कुछ अलग तरह का भाव रखा जाता है और ये सोचा जा रहा है कि नहीं, ये जो पुरुषवादी पारिवारिक जो सत्ता है उसमें कहीं स्त्रियों की अवस्था ठीक नहीं है, तो या समाज राजनीति या अन्य हर तरह की परिस्थितियों में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके बारे में, उनको सशक्त करने के बारे में किस तरह का साहित्य रचा जाना चाहिए, उस पर भी लेखिकाओं का ध्यान गया है। पुरुष लेखकों ने भी काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन जो स्वानुभूत सत्य होता है वो लेखिकाएं ही जो है प्रस्तुत कर सकती हैं। तो इस दृष्टि से यह कार्यक्रम रखा गया है और इसमें अगला सत्र जो है वो ममता कालिया हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका हमारे बीच पधार चुकी हैं, तो उनकी अध्यक्षता में संपन्न होगा और उसमें असमिया, बोडो, अंग्रेजी, गुजराती, संताली, तमिल और उर्दू भाषा की लेखिकाओं को हमने पूरे भारत से आमंत्रित किया है। वे लोग इस विषय पर चर्चा करेंगी। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं ममंग देई जी और अनीता अग्निहोत्री जी, उनका अंग वस्त्रम और पुस्तक देकर के स्वागत करें। In actuality. Therefore, no society can be called as progressive or advanced unless women writers, scientists, artists, researchers and sports personalities are held in high esteem. All over the world, we have a rich vein to the patriotic writings through poems and tales. They also contributed to women journalism in the country. Women also invented lullabies with patriotic flavor, and this instilled the sense of patriotism in children from the very young age. Women of India during the independence movement were a visible army who kept on providing fuel and nourishment to the fight against British. Friends, like all of you, I am also eager to listen to the experts and scholars who are present here. With these few words, once again I welcome all the dignitaries on the dais and all of the dais. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राव साहब। आपने एक संपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया में जो महिलाओं के सशक्तिकरण का जो एक परिदृश्य है उसको हमारे सामने रखा और आज हम साहित्य में उसकी
विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि ममंग दई जी हैं। नाउ में आई रिक्वेस्ट ममंग दई जी for her inaugural address. Mama Dai is a poet and novelist hailing from Arunachal Pradesh, a former journalist and president Arunachal Pradesh Union of Working Journalists. Her first publication, Arunachal Pradesh, The Hidden Land, bagged the State Barrier Alvin Award. She also worked with Worldwide Fund for Nature in the Eastern Himalaya Biodiversity Hotspot Program and was member of Arunachal Pradesh Public Service Commission. She was awarded the Padma Shri, the fourth highest civilian award of India, and the Sahitya Akademi Award in 2017 for her book The Black Hill in English. Mamang Dai ji. Thank you for the kind introduction, and respected Anita Agrihotriji. We were actually colleagues and in the same hostel in Labasna, Mussoorie, many years ago. And of course, our beloved Dr. Srinivasa Rao, Secretary Sahitya Academy. He is the face of the Sahitya Academy, I think, to many of us. Madam Mamta Kalia ji, thank you for being here, and all scholars and friends present here today. Post-lunch, I feel a bit relieved that the hall is somewhat full, and I was also thinking of the words of Julius Caesar's wife saying, "Beware the Ides of March, Aaj 15 March hai." I will lose my papers, I will forget my pen, kuch ho jaye, but touch wood. Post Omicron waves also, I think it's really wonderful to be able to celebrate and meet physically here again. So many wonderful panelists are here who will be talking about literature and women empowerment. Famous Salmaji is here, I know Anjali Daimari is here, Kori Hiloidori, all friends we know, through offline mode in the last 2 years. So it's wonderful to celebrate with Sahitya Academy and celebrating the diversity and richness of Indian literature. So about literature and women empowerment, I would just like to start with an image. This is of an ancient ship in the shadowy waters, a dramatic poem, Yeats, W.B. Yeats. There are some that weigh and measure all in these waste seas, they that have all the wisdom that's in life, and all that prophesying images made of dim gold rave out in secret tombs. They have it that the plans of kings and queens, but laughter and tears. Laughter and tears, that every man should carry his own soul upon his shoulders. And then he continues that women are always strong. It's just that the way the strength has been perceived has changed over the times, or it's been diminished or made irrelevant. We grew up, I have become neglected because history is in the telling, and most of the tellers in those times were men. Yet women's voices have risen up against all odds throughout history to overcome so many restraints, to add splendor and importance to the history of human civilization
not only in literature. Today, of course, we will be talking about literature and women and writing, but also through revolutions and kingdoms, empires, warrior women, science, medicine, ecology, anthropology. Similarly, women, when they were writing in the past, taking it from the past, I'm not dealing with women's writings and the freedom movement specifically. That was very brilliantly covered in a session this morning with Sanyukta Dasgupta and two speakers, Dr. Sudha Sheshayan and Sangeeta Bhadwal from Jammu, covering Tamil writers and the situation in Jammu. This is just literature and women and writing. So even in literature, women had to use male pseudonyms, and we have the wonderful character of, say, Catherine Earnshaw in Wuthering Heights, another iconic, fierce, independent woman. We, as readers of English literature, I'm referring to mainly, kept in our hearts, saying, I'll be like that, I'll stand up against what is considered natural and normal, and that natural and normal is not always superior. Today, of course, I can think of so many writers. We were talking about Ashapurna Devi, Mahashweta Devi, Salma is here, Karabi Deka she was not here this morning, but Arupa Patangia, Nobanita Devsen, Gita Hariharan I can think of, Madam Kalia is here, so many women writers who have filled their notebooks with words and become sort of emblems or symbols to so many to a younger generation of writers. This is from Dr. C.S. Lakshmi Ambai, who won the Sahitya Academy Award this year, from her book translated by G.J.V. Prasad, A Red-Necked Greenbird, I quote, that clouds burst forth to ask them to write, and that when they opened their windows in the morning, stories came flying in as birds, has been stated by a few writers. That they are male writers is another matter. While such miracles haven't happened to me, the window has continued to play a major role in my life as an opening to see the outer from within. There are still many notebooks to fill with stories. There are many pencils to write and sharpen and use up. Writing, are the stories writing me, or am I writing the story? These are the words of Ambai from A Red-Necked Greenbird. Excuse me one moment. I'm very happy. I think both of you. So another image that comes to mind is the opening lines of a poem from a contemporary poet. This is Mona Zote of Mizoram. What should poetry mean to a woman in the hills as she sits one long, sloping summer evening in Patria, Aizol, her head crammed with contrary winds, pistoling the clever stars that seem to say, ignoring the problem will not make it go away. I wonder if this is why we write. Ignoring the problem won't make it go away. Words are vehicles of communication.
Words are travelers, and they are flying in or drifting out of those windows as we fill our notebooks with expressions of love, passion, intellect, kindness, change, and meaning. The important thing is that the window must be open to be able to look out or to look in and share both the exterior and interior landscape. This is my understanding of empowerment. And if empowerment equals emancipation in all meanings of the word, then I think today maybe, empowerment has become such a buzzword for the emancipation of women. It comes with so many connotations of gender, race. There are new words in our consciousness, like intersectionality, which I believe is really talking about the multiplicity of truths. There are so many different truths for different cases and different layers in the movement we talk about these days. And I feel it has also kind of separated or is separating from what it first originally started with, the empowerment per se. And when you say women empowerment, it is kind of separating from what it started with as a socialist working class movement. So now I feel we have to be a little bit careful about interpreting this. It's a very complex, touchy issue, but it should not divest us as writers to fit into a particular mold of what is an emancipated woman. We have to rely on our imagination and our fearlessness and feel, even if we still continue in the traditional realms, it can still be emancipatory. In a way, it's like we have to free the word gender, and we have to give it a new empowerment, new freedom. I don't know if I'm expressing this very well, but I have many sisters in the village whom I keep in close touch with. Many of the things that we talk about empowerment is in the domain of, say, the more privileged and literary sections of women. And many of the things don't have relevance in their lives that we talk about as, gender equality or feminism or emancipation of women. But they have something that they also offer to me, is that they have great endurance and a great sense of humor. And I think this empathetic, kind of sisterhood of being a woman, of womanism, let's say, is really the ideal for my sense of women empowerment. You are your own stories. The plot you choose may change or even elude you, but being your own story means you can control the theme. It also means you can invent the language to say who you are and how you mean in this world. This is Toni Morrison. For example, if we look at the pandemic also, so many of our beliefs, that we stood rigidly by, life moving in this very globalized spin where everything is equal, it was suddenly disrupted by the pandemic. And the frontliners were really the nurses in hospital who were working overtime. It was women who were worrying about food security, about child care, and even now I think with the big corporates and multinationals coming back and offering, asking their employees to come back, it's mainly with the offer of
sort of, it's not about child care or, nurturing and things like that. It's more about, because they need the women workforce back, if we specify women, even for men also, but basically a lot of the women workforce, and even in our own homes, if the maid fell ill, the domestic help fell ill, it became so difficult. So we are really, not greatly emancipated in that sense at all, and we have to think about these things, that you can't have stand-in people who are more privileged to fight for you, but because we don't have the writing language, it was very difficult to express oneself. But then a lot of people came forward, and a lot of Hindi scholars presented poems, which I'm not proficient in Hindi, but we made an attempt sitting together. And the source material, of course, was, the village background. Their life said all thoughts are equal. So everything is meaningful. You can learn something, and everything is really adding to human civilization, actually, if you pay attention. Because this first Zuban writer, there's a young girl here, she's in Delhi, and she wrote a poem for her mother. It was titled "A Poem for My Tribal Mother." And it's a long poem, but the last few lines were very moving, because her father passed away, and then the situation for her mother. And before that, what had happened, I'll just read a few lines. Anne, meaning mother, I wish you could remarry and have a friend to age with. But our customs prohibit us from tasting love. They say, Doni poloa landuko. Ultimately, truth prevails. Anna, I will come home only when the truth prevails. Sorry, Anna. Until then, I will resist for freedom, for you, many young girls and me, waiting to taste freedom. So this was a poem by Murang Rina, and this is where I think the act of writing, why literature is important for any society, is that all ideas are born and then they lead to action, ultimately, or a movement to change policy frameworks for emancipation of women, for betterment of society, for social justice. But it comes through that act of putting your thoughts down, asking questions, and then, a story is born, or an essay, a writing, and a society has a body of literature, written literature. This is also with women of, smaller ethnic groups. We have Bodo women writers. This is quite new. We have Dimasa, Maithili, the role of women in Nepali literature. So all these things coming together, it makes for a better understanding, a fuller understanding of a society. Through engagement with literature, we express our views, transmit realities that have been suppressed, and join in silent form of activism. I always feel writing is my form of activism, because I can't pretend and say I will sit in protest, day and night, but we feel as much, even though we may not be out there on the streets. And this, at least, we can put in writing and explore the complexities of human experience and emotion. In the process, a new relevance, new perception is brought to old stories and questions of societal issues.
Literature is the meeting ground that collective and individual perceptions are changed and new visions of progress identified and articulated with far-reaching consequences for women empowerment and the well-being of society at large. I was talking about resist this and rise of your feeling. Otherwise you feel sort of quite disenfranchised if you feel you have to write for a particular type of reader, or you have to write in a particular way to be able to be recognized. And her youthful son, bewildered, I asked, "Why, mother, what is this?" Mother looked at me once and said slowly, "If I don't carry them, how will they survive?" Without any further words, she walked away as before, calmly, solemnly, my beloved mother. So this is what I'm saying, if we try to abandon what is considered traditional realms of women like childcare, nurturing, motherhood, I feel in fact we should come back and celebrate these protests over. There is always hope to create images of truth and loveliness in a new space that can illuminate our human predicament. There, beyond the last hill, through be comfortable as ourselves. I would like to conclude with another little reading. I told you I'm not afraid, and I'm not afraid of the words of men. This is Derek Walcott, Caribbean poet and playwright. The time will come when, with elation, you will greet yourself arriving at your own door, in your own mirror, and each will smile at the other's welcome and say, "Sit here, eat." You will love again the stranger who was yourself. Give wine, give bread, give back your heart to itself, to the stranger who has loved you all your life, whom you ignored for another, who knows you by heart. Take down the love letters from the bookshelf, the photographs, the desperate notes. Peel your own image from the mirror. Sit, feast on your life. Thank you for being so patient and listening to me. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Maman Daisy, for your wonderful speech. Now may I request Srimati Anita Agnihotri ji to say a few words from the chair. Srimati Anita Agnihotri served as an IAS officer and retired as secretary to the Government of India. She has authored over 40 books across all the genres of creative writings, poetry, fiction, essays and children's books in Bengali. Her books have been translated into many Indian languages and also into German and Swedish. Her writings focus on the silences of marginalized people, the tribal community and the women in particular. She has received several literary awards including the Sharad Puraskar, Sahitya Parishad Samman, Crossword Economist Book Award and the Bhuvan Mohini Dasi Gold Medal and many more. Srimati Anita Agnihotri. Namaskar. Our friend Baban Rai, K. Srinivas Rao ji, Divesh ji, and all the Mamata ji, all the eminent writers, and Sanjukta ji, my friend, all the eminent writers, Vishwas Patil ji, I'm honored to have you here as the sole representative of the male writers. Okay, but don't feel marginalized, please. Okay.
and such diversity of language, experiences around me. I am really honored to be here. There is very little I can add to what has already been said, especially the deeply rooted, diverse perspective amongst words brought about. I have nothing to say, but since I'm a speaker of the keynote address, I will raise a few questions. But I must tell you that Deveshji's mention of me as an IAS officer embarrasses me to no end, because I started writing as a child of 5, and by the time I was an IAS, I was already a writer. And to make matters worse, Mamangdai and me, we were roommates in the National Academy of Administration in the IAS for probably a few months or days, after which she decided to get liberated and ran away, and she became a poet, and I trudged along till I retired, but I also continued to write. So please don't introduce me as, no, not that I want to negate my past, but I think writing has been my core all my life. Okay, thank you so much, and I will try not to repeat what has already been spoken, but this is the way I was looking at it. I mean, when we look at Indian experiences, I'm mainly an Indian Bengali writer, we see women as part of continuity of the civilization. They are exclusively been responsible for building kingships, for setting up homes, rearing children, collecting water, fuel and food. Sowing and transplantation also is a major responsibility. They work at home and outside, and their work is very little understood and often underpaid, if not unpaid. So I always feel a little hesitant about using the word empowerment, and I feel more difficulty with the Hindi word Sashaktikaran. I would like to, and this also Mamang mentioned, that I would like to see this as creation of a just world for women. Equality for women is a more appropriate expression, because ultimately what are we trying to, where are we trying to reach? Basically, a just and equal world for women. Historical disadvantages have been there. Patriarchy has been a very important force. Women's freedom have been limited, constraining their learning, mobility, and not allowing them the fullest expression. And the overall reality, when we see today, these are stark on our faces in the form of information. Declining sex ratio of the girl child at birth, low rates of female literacy in distant areas, in tribal areas, high incidences of child marriages, and consequent high rates of malnutrition among children of young mothers, and an entire generation's compromised future. These are not the dominant scenario, but this reality is there, and we must accept it and then think of what we can do. Now, where does literature figure in all these realities of an average woman's life? Does it emancipate women? Does it give expression to their silence? Does it enable women to dream? Do men's portrayal of women stereotype them? If literature is to liberate, must women write their own stories? Some of these have been, of course, discussed, and we'll be discussing many of this in the next session. I was looking at these 2 edited volumes which traces women's writing over a span of 2000 years. And of course, we cannot put names to the stories and folklore and mythical anecdotes which women have been telling at home, carried through generation, because there is no name of any author there. So the total time span when women have been trying to express themselves have been maybe centuries and millennia. We have 3rd century BCE Sangam writer Mulla. Apparently she is the oldest known Telugu writer, has written about love and relationships in her time. From then to the present women writers, there has been a succession of writing on several ideas and genres about desire, love, exploring their own experience in physicality, about spiritual longings, homes and kinships, about children,
about other men and women in their lives, about aging, ailments, and death, which are expressions of fragility of life. Now, writing these experiences obviously gives fulfillment to the writers. But on the other hand, the readers who are constrained within their own spaces, repressed by circumstances, it becomes a process of self-discovery. The legendary novelists of Bengali, whom I have read when I was growing up, Bankim Chandra and Rabindranath, created modern Bengali prose, and also women protagonists whose names have become part of our folklore, I would say. Bankim Chandra's Rohini and Kapal Kundala, Devi Chaudhurani and Aisha have evolved with time into Binodini of Chokher Bali, Kumodini of Jogajog, and Ela of Char Adhyay in Tagore. They are all modern women capable of voicing their thoughts, yet unable to regulate their own lives given the social circumstances they were born in. Do women write differently? Yes, there is a deep intimacy and bonding, ability to identify with the protagonist, and intricacies of the mosaic of the world of women. This is what makes writing by women on women unique. All writing need not be feminist. There are feminine ways of viewing things. The feminine viewpoint is once again becoming important because it is throwing lights on certain facets which probably could not be confined within the confines of theories. We have mentioned them before, writing of modern women like Asha Purna, Mahashweta and Namanita Dipsen. They have shown the difference between women's own voice and the imagined voice. In a sense, with women writers writing on women's lives, there is also a continuity of tradition from the past. We have old poets, women poets in Marathi, Jenabai, Muktabai, Soryabai. The gender voice has remained a very important instrument in creating a world of equality between men and women, and in the process bringing out more women out of their shells. Literature is not a process of concrete intervention. Obviously, it is not like education or health or skill development, but it roots the reader to the society, and it has the potential of changing the way we look at reality and life. I mean, you all know this much more through your own writing and your reading. Do men need to be empowered too? Can a force as powerful as patriarchy be shaken by literature? Or does it work through the minds of individuals who are conventionally used to think that men are superior to women physically and intellectually, that women's place at home, men who are responsible for violence at home and aggression in office? I have found that a very effective and non-violent way of countering gender violence and patriarchal mindset is to immortalize such characters, such torch-bearers of patriarchy in literature. I have done it often, blending and mixing characters which obviously when you read you can't make out. But a more direct way obviously is to write and protest. To write our protests, document truth about violence and inequality as we see them. Literature has been the window to the outside world for most of us. Rabindranath Tagore showed the beauty, poverty and class relations of rural Bengal in his time. Jivananda Das, the surreal beauty of nature and its trickling down on human miseries. Bibhishan Bandyopadhyay with his Pather Panchali infused our childhood with hues of inescapable tragedy and acceptance of death as a continuity. Their influence had churned my soul as a child. I started writing, I started reading. I always wanted to be an author, but only when I started writing as a woman narrator, I could delve deep into the existence of women, their toils, their clinging to life with hope and desperation. And I traveled extensively, not with the purpose of writing, but just to understand lives of both men and women, those who are marginalized in tribal areas across central India, across Bengal, Maharashtra, and I tried to bring back their stories in my writing. But am I the authentic voice for women? Since women are not a homogeneous entity, I need to ask if I can speak in the voice of the Dalit woman
and for the minority women, because I am none of them, or not for that matter, the poorest women-headed households of our cities and villages. Indian women have written about their social and individual identities since a long time. Prose and poetry of many women writers, I cannot mention many of the names, but Ashita Devi again, Nirupama Dutt in poetry, Mrinal Pandey have got into the identities of women, not only identities of caste, tribe or religion, even food habits differentiate one group of women for the other. The brave women writers and their world, they are the best legacy we have got. From Ismat Chugtai, Indira Goswami, Mrinal Pandey, Nirupama Bargwai, Ashapurna Devi to Temsula Au, the brave, talented women, they have not only written truth to time, they are the role models of numerous readers and younger writers because of their courage, the resilience and the commitment to art and people. Knowing them through their writing infuses the readers again with courage and hope. I conclude by reading out a few lines from a poet of our times, which reminded me of Rabindranath's play Chitrangada, written nearly 1.5 centuries ago, where Chitrangada tells Arjun, I am not the one you worship or you pity. You cast me aside or you worship me in such a way that you look up to me. I am the one who stands next to you in troubled times, in difficult times, as an equal. Rosemary writes in her beautiful love poem, I just read out a few lines. What I have to tell you. This has been translated from Malayalam by J. Devika. Long poem, but just a few lines. You must not fear my love. It expects nothing from you. बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। और मित्रों, इसी के साथ ये उद्घाटन सत्र जो है वो संपन्न होता है और बिना किसी ब्रेक के हम लोग अगला सत्र आयोजित करेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट समय लेंगे मंच को व्यवस्थित करने के लिए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभागार में स्थान ग्रहण करें। अनीता जी ने कहा कि उनको एक IAS ऑफिसर के रूप में क्यों शुरुआत में ही प्रस्तुत कर दिया गया। असल में यह भी महिला सशक्तिकरण का एक स्वरूप है और उसको भी सामने लाना जरूरी है। और सबसे जो बड़ी बात है कि हमारे समाज में जिस तरह का एक प्रचलन IAS ऑफिसर यदि उनके परिचय नहीं न बताया जाए तो वो देखता हो कि उनके नाम के साथ डॉक्टर, प्रोफेसर बोला जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है और वे अपने नाम के साथ कवि या लेखक या साहित्यिक बोला जाना पसंद करते हैं। बस इसको थोड़ा आगे तो विचार सत्र में अध्यक्षता कर रही हैं हिंदी की प्रतिष्ठित कथा लेखिका श्रीमती ममता कालिया जी। उनसे अनुरोध होगा कि वे मंच पर आएं। और इस सत्र में हमारे बीच असमिया की लेखिका है श्रीमती फौरी हिलोविदारी जी। उनसे अनुरोध है मंच पर आएं। बोडो की लेखिका है अंजलि दैमारी जी। उनसे अनुरोध है मंच पर आएं। अंग्रेजी की लेखिका है हमारे बीच नीतू भट्टाचार्य जी। उनसे अनुरोध है कि मंच पर आएं। उर्वशी पंड्या जी गुजराती की लेखिका। संताली से श्रीमती रानी मुर्मू, युवा लेखिका, बिल्कुल एकदम नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाली। तमिल भाषा से सलमा जी और उर्दू भाषा से हिना अफसान जी।
आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, हमारी सभा अध्यक्ष ममता कालिया जी हिंदी की प्रतिष्ठित कथा लेखिका हैं, कविताएं भी लिखती हैं और भी कई भाटी में अंग्रेजी विभाग की प्रमुख भी हैं। आप साहित्यिक मुद्दों पर लेख लिखती हैं। अंग्रेजी से असमिया में 2 पुस्तकों का आपने अनुवाद किया है और 3 पुस्तकों का संपादन किया है। लक्ष्मी नंदन बोरा के कृतियों पर आपने एक आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखी है। हमारे बीच है अंजलि प्रभा दैमारी जी। अंजलि प्रभा जी सामाजिक कार्यकर्ता, अनुवादक और अभिनेत्री हैं। वर्तमान में आप बोलो महिला न्याय मंच की मुख्य सलाहकार हैं और एशियन इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं। आप यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम और इंडिजिनस इशूज UNPFII में 4 बार सहभागिता कर चुकी हैं। आपको 2007 में साहित्य अकादमी में कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हैं। हमारे बीच रानी मुर्मू जी हैं। रानी मुर्मू जी संताली की कवयित्री और कथा लेखिका है। आप संताली, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की जो दयानंद गर्ल्स PG कॉलेज कानपुर में उर्दू की सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और ITS नामक एक सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था की संयुक्त सचिव भी हैं। आपके शोध आलेख विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आपकी पहली किताब अदब और तनकीद को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा अन्य अनेक पुरस्कार सम्मानों से आप विभूषित हैं। आरंभ में ही सबका परिचय प्रस्तुत करने का उद्देश्य इस चीज़ को देखना, आप लोगों के सामने यह रखना है कि देखिए कि ये सभी महिलाएं लेखन के क्षेत्र में तो जुड़ी हुई हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में ये सक्रिय हैं। और आज जो हमारा मुख्य विषय है साहित्य और महिला सशक्तिकरण, इस पर हम इन लोगों से इनके विचार सुनेंगे। मैं अनुरोध करूंगा ममता कालिया जी से कि वे सत्र को चलाएं, एक एक करके सबको आमंत्रित करें, हम लोग सुने सबको। मित्रों, सामने आइए। तो ये जो रचना शक्ति है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अक्सर ये होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि शक्ति जो है कोई शारीरिक चीज़ है। हमेशा जब भी शक्ति की बात होती है तो लोग कहते हैं भाई स्त्री तो कमज़ोर है, पुरुष सशक्त है, उसी के संरक्षण में रहेगी। ये सदियों ये पानी हिलतारी, पानी हिलतारी। आप अपनी कहानी का पाठ करें। Subject: literature and women empowerment. These two sides, literature on the one side and women empowerment on the other side. The relationship between the two is actually not all the female discourses, the stories of women. So that is the importance of the word literature. We do not have to focus only on the negative or only the positive aspect of literature. Both sides must be taken into consideration. And another thing that has come to my mind is that literature doesn't mean this injustice against women has been going on through other writings as well, through critical literature, non-receiving or not responding to women's writing. That is also a kind of negative discourse. Similarly, anthropology, sociology, history particularly, these are also some other discourses through which women's subjection to patriarchy is maintained, it is sustained in our society. So literature's positivity must be cultivated.
Another thing with respect to women empowerment must be emphasized at this point, because when you talk about women's empowerment, it seems that the people who do not belong to the female sex, sometimes they feel uneasy about it, uncomfortable. So this discourses on gender equality must be inclusive. It should not exclude the other genders as well. We know very well that male writers have been continuously contributing to the freedom, to the liberation of women, some writers, but it must be acknowledged by the female writers. The divide between the two genders must be brought to an end. War cannot be brought to an end, to be as brief as possible, because it is not easy to paraphrase the history of Assamese literature, and Assamese literature written by female writers is more than 500 years long. It is not a short, independent to write in their own ways. But is it really true to say that we do not have a tradition? Actually, we have a tradition, but there is always a parallel tendency to negate that tradition. I'd like to justify that point by giving some examples from my own literature, my own language, that is Assamese. It is in 16th century that there was a poet, a female poet, whose name was I. Padmapriya. I. Padmapriya was the daughter of a disciple of Srimant Sankardeva. But I. Padmapriya, who wrote devotional poetry, she was not acknowledged as a literary figure even in the 20th century, let alone in the 16th or 17th century. So her tradition, her writing, that has been negated. There is no poetry in the name of I. Padmapriya, but there are writings by male writers belonging to the same period. So that is the historical neglect of the female writers. Another writer who belongs to the 19th century, an Assamese writer whose name was Padmavati Devi Fukonani. She belongs to the last part of the 19th century. She wrote the first Assamese novel, Sudharmar Upaikhan, but she was not acknowledged as the first Assamese novelist on the ground that it did not have, that novel did not have perfect craft, and it was based on a religious subject. So those were the arguments to reject her right to be the first novelist in Assamese literature. Another example of historical neglect going on in the field of literature. Then in the 20th century we have Chandraprabha Saikyani, who participated in the freedom movement. She was instrumental in bringing out the female from the remote corners of the society. And she had a very troubled life. She was the mother of a child, although she did not marry anyone because her love affair failed. So these were the examples of rebellion in her life. Her personal life was full of examples of rebellion against the system. And in her novel, as well as short stories, we have seen that her characters are the agents of change. Reformation of the society can be brought by the females as well, that she has shown through her own writings. And those were not imaginary characters, those were the manifestation, expression of her own personal life, because in her personal life she was the very symbol of rebellion, who can bring in change to the society. But she is also mentioned only as a female writer in one of the short chapters on women's writing in Assamese history of literature. So those are the examples of historical neglect which must be addressed not merely by the female writers but also by the male writers. So now the subject of my paper is how one of the eminent writers of my time, this contemporary Assamese literature, Orupa Patongia Kolita, addresses the subject of historical neglect in one of her recently released novel, the name of which is Zasnar Chitas. It's a phrase from Jhumur,
and in English the name of the novel means Sprinkling of Moonlight. Apparently the name sounds very romantic, but it is not so. Let us see what she says, what she shows through this newly released novel. As we are celebrating 75 years of India's independence, we need to question who were the unsung heroes of our freedom struggle. In my state, there is a section of subalterns who have been denied space in modern historiography of India. Even in local history, they are absent characters, let alone the national history. Even in SMS history, there is no mention of the role of these subalterns. And who are they? They are the female tea garden laborers. Orunabhatongia Kadita's Dasner Cheetahs repeatedly points out that neither official history nor subaltern history has tried to uncover the truth of the female tea garden workers' active role in the freedom struggle. The name of the novel is deceptive, as I have already pointed out. It is not a romantic narrative. The novel centers around the female character. She is Durgi Bhumis. People of Assam have not heard of her name, but she was a freedom fighter. India drinks tea, we drink tea, but we are not aware of the blood shed behind the stories of the making of the tea. And this novel brings to light that story. Then why she has resurfaced now, Durgi Bhumis? The author, Orunabhatongia Kadita, came across a few lines in a little magazine about one Durgi Bhumis who was a tea garden laborer in a remote tea estate in the pre-independence days. Then begins the author's search for the roots of the women named Durgi. The author says that during her 4 years long search, she has collected lots of information about Mr. Fraser, the British officer who worked as a manager in a remote tea garden area. She has come to know even the passport number of Mr. Fraser, who was a real character. Remember, Durgi was a real character. Mr. Fraser was also a real character in the colonial days in Assam. She has come to know, she means the author, she has come to know even the passport number of the officer. She has gathered lots of information about the lifestyle of the British Mem Sahibs. But there is a total silence about the real Durgi. It may be mentioned that the female tea garden laborers in Assam are subjected to 4 types of social exclusion. We have been talking about intersectional disparities, and this is very much true with respect to the female tea garden laborers in Assam and also in Darjeeling. Those four types of social exclusion are caste, class, race and gender. They are also the children of those Adivashis who were forcibly displaced from some places of North Bengal, Orissa and Bihar by the British tea planters after it was found that the upper Assam soil was suitable for tea plantation. Durgi was kept as a mistress in the British officer Mr. Fraser's bungalow. Females like Durgi and her tribe were called Mini. They did not have any name, they were called Mini. She gave birth to 3 children, Baby, Lava and Kusha. Those 3 children were fathered by Mr. Fraser. Fraser lived for his own country in the colonial days itself with the first child, Baby, without thinking twice about Durgi and the 2 other children. The reason as to why Fraser left for England, leaving behind the 2 other children with their mother, was that Baby's appearance resembled the appearance of Fraser. Their complexion was white. Fraser left for his country. It was an entirely physical relationship for hushed up, but after a few days, Durgi's dead body was found in a dense forest near the garden. She was killed. Our writer, that is a real story. Our writer has met a large number of people inside and outside the tea estate and is shocked to have been faced with total erasure of the eventful life of Durgi. But that did not breed identity. Julie is the fictional name. Her real name is Chulbuli.
Arupa, the author, tried hard to find the third generation of Durgi, but she died early. Malnutrition is a common cause of early death in the tea gardens. Then she tried to find out the fourth generation and failed again because she also died early after giving birth to a girl, and that girl is Chulbuli. The girl with brown eyes and fair complexion is Chulbuli in real life and Judy in the fiction. We saw her photograph in the book release function. Arupa's novel runs parallelly at two different levels. At one level, she is undertaking a quest in search of the forgotten women in the history of freedom movement. The quest has become her life. As an author, she understands its indispensability. At another level, she constructs the story from some photographs and, most importantly, from the folk songs known as Jhumur, which look like romantic songs of love, but one can uncover the sordid tales of sufferings of the tea garden life in the words and expressions of the songs, the Jhumur. The author's quest in search for Durgi is the quest each female writer needs to undertake. And this quest will bring the forgotten voices from the periphery to the pages of history and literature. Arupa, in her journey back and forth, also finds that the condition of the tea garden laborers is not better than that of the laborers in the colonial days. So we must question as to the role played by the post-independence India in the improvement of the condition of the tea garden laborers, particularly the female laborers. This is how discursive sisterhood is formed and the ideology of gender equality percolates down to the people who need to be heard. Arupa is also a short story writer. Through a number of short stories, she emphasizes the need to speak on behalf of the gender subalterns. The subalterns like Durgi need textual representation, because if these stories remain untold, then future generations of historians and common people will subscribe to the myth that illiterate female laborers in the tea gardens simply adorn their hair with marigold flowers and happily pick 2 leaves and the bark from the tea plants in daytime and dance and sing beautifully to the tune of the Jhumur songs. The myth will spread that they did not play any political roles because they were never subjected to any suppression. As I had made Durgi the material for my presentation, I believe this will also create an environment for discursive sisterhood. Durgi children are like floating water hyacinth. Yes, floating hyacinth they are, but water hyacinth are not scared of strong currents of water. They survive. Thank you. मंचस्थ दोस्तों, ये विषय इतना विशद है और हम सबका इतना प्रिय है कि इस पर बोले तो हरी कथा अनंता है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम अपने वक्तव्य को थोड़ा संक्षिप्त रखें, 10 से 15 मिनट के अंदर हम इसको खत्म कर लें। अब मैं तमिल की रचनाकार शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य दें। அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you very much for inviting me the Sakitya Academy. Before I start my paper, I want to a famous slogan by French feminist, husband name from your name. Finally, get political power. Empowering women through literature. Literature in general can enhance life and elevate the status of the individual. This is more appropriate statement in the case of women. If literary reading expands and elevates the personality of the individual,
Then literary creation reveals one's innate abilities and magnificence and has a profound impact on one's social status. Women who for centuries have been placed in a position where they are unable to express themselves naturally, are expressing themselves strongly by enriching themselves with literary reading and literary creation. Literature, just like education, gives women the strength and opportunities that are denied by the male-dominated society. Literature has helped them to know themselves, to understand the world around them, and to gain to deeper understanding of life. Literature has helped to express oneself and to move forward in social hierarchies with self-confidence. The literary contribution of women in Tamil has been immensely powerful and broad-minded during the Sangam period. Avayar, Karikal Ammayar and Velli Vidya were the examples of this phenomenon. If the kings listened to these women poets' advice and opinions, it was because of their wisdom. Their wisdom emerged as literary works and influenced the thinking of the wider community. Avai's literature has been a testament to the fact that in an environment filled with feudal values, social hierarchical tensions and patriarchy, she lived as a sage revered by monarchs. It was a time when women were empowered by literature. If that awe-inspiring contribution that took place 2000 years ago had developed in the same direction, women in our society would have power, opportunity and status to men at all levels. While persons like Avayar cannot be said to be the exception, there is no denying the fact that there is not much. If women had been allowed to have access to education and literature, it would have made a huge difference to the emancipation of women. Women were less educated when men were widely educated in the last century. Change began in the latter part of the last century after education began to become more widespread, including women and those belonging to the oppressed sections. The gradual evolution of women into education, literacy, literary reading, literary application were not with that. They began to speak out for their own interest and for their denied rights. Some became involved in direct politics, while others began their upward journey with the weapon of writing. As a result, the writing made their identities clearly visible in public. They evolved in different voices and creativity. Literature redefined their status and value in society. Today has affirmed the power of many women, Dalits, tribals, transgender people, sex workers and minorities. A real power-reached woman who started functioning in the world of poetry. Even if education helps women to gain greater awareness and empowerment, that power will not be meaningful unless it contributes to a real change in thinking. This is where literary reading plays an important role. It's literature that has empowered people like me, even without education. The reception I received when my poems were published in the 90s turned into recognition for me as a creator, made me feel as a strong person. It's not just recognized, it transforms into a tremendous status in society. No one can stop or change the enhancement made possible by creativity. This recognition and respect through writing gave me the boost and encouragement to continuances and environment. This made a huge difference. Soon a situation emerged where female poets had to be recognized and spoken about.
The world of women, which was mostly expressed by men till then, is now being expressed by women. Though these new breed of women writers were occurring in the field of poetry, occurring in prose as well, thanks to the literary contribution by women, feminist views and discussions about women came to the fore. Feminist perspective and discussions about them have become the talking point. The assertive and sensitive language of female writers further enhanced their power as individuals. Literature has helped the environment to change its face and female creators to get empowered in many ways. Female writers were empowered just as the lives of those who made significant achievements in fields such as education, business and sports were empowered. This year's Sahitya Academy Award winning writer Ambai is one of the pioneer writers of Tamil. A few decades back, in a male-dominated literary environment, only a few like her were seen as simple of female writing. Literary is the basis of all the recognition and value she has gained in the society. Literature is also the reason why I or my fellow female writers such as Sugitha Rani, Meenakshi, Vatsala, Suhanti Subramanian, Bama, Revati, Putti Revati, Kalki, Nalini Jamila are seen as important personalities. This is our identity. This takes us to different walks of life. Many women who have gained recognition and identity through writing have entered many fields such as film, media and politics and are establishing their unique identities there. This has Just to say about empowerment and courage writing in Bodo. Respected chairperson, respected dignitary, women activist. She said, let me see the program. And she started seeing the whole 6 days program. And she, what is this? Then I said, what? Then she said, out of 6 days program, the women program has been kept for the last session and the last day. I said it may not be purposely, but still, sometimes it strikes. Anyway, without wasting time, let me read out my paper. I was asked to write on women empowerment and Bodo literature. The concept of women empowerment has been accepted as a legitimate goal of most of the policies concerning women. It has also assumed a lot of importance during the last few decades in social science literature and policy research. Empowerment is a wide-ranging that covers a wider set of actions beyond the provisions of educational, social, and economic opportunities. Essentially, it is aimed at uncovering the inner strength of women. Literature is a tool of self-expression and self-identification in a powerful tool of empowerment of women internally as well as in other external spheres. Women literature helps us to understand the social construction of men's and women's traditional and modern roles, as also of the responses to these roles and the conflict generated by them. This understanding can form the basis of the policies and actions meant for women's empowerment in the practical domain. The literature of any nation is the image that reflects the sincere ideas, so we can call it the mirror of the life, which reflects writers' thought about life and real situation of a society as well as of the world around. On the other hand, literature is the foundation of humanity's cultures, beliefs, and traditions. It serves as a reflection of reality, a product of art, and a window of an ideology.
everything that happens within a society can be written, recorded in, and learned from a piece of literature. It is somewhat universally recognized that the idea of empowerment in the context of women can be considered as such a relationship between women and society that is based on the values of freedom, rights, and equality. Such a relationship can be said to have the following main elements. Removal of historical and structural discrimination against women in personal and public domain. Equal treatment and equal opportunities for women in all spheres of life, economic, political, social, educational, etc., regardless of the differences based on caste, culture, religion, race, nationality, etc. Equality of rights and equal protection of rights of women. Action for organization of awareness program. Steps for implementation of women development programs and various acts. Pursuit of strategies to bring in egalitarianism and to promote not just formal legal equality but also substantive equality for women. According to the United Nations Development Fund for Women, the term women's empowerment involves acquiring of knowledge and understanding of gender relations, development of a sense of self-worth on the part of women, a belief in women's ability to bring about the desired changes, and securing a woman's right to control her own life. Empowered women would have greater choices and bargaining power to influence decisions concerning them. The idea and actions concerning women's empowerment aim at the accomplishment of justice, not just in the national level, social and economic order, but also in the international order. In Boro literature, we can also see a little concept of women empowerment. Boro women writers as well as men writers try to influence this idea among the society. But in the very field of literature itself, women writers still need to struggle to get recognition. There is belief in the society that women's writings are not much serious, but more emotional. The fact is that women's writings are more realistic with more experiences, feelings, and based on truth. As we know that literature is the best tool to empower women, but still at this hour, women writers have to struggle to find a publisher to publish their books, whereas women are considered to be the mother of literature. Generally, in indigenous Boro society, work used to be given more importance than any other issues. This kind of mindset can be changed only through educated women, because women understand more. At present, we can see slightly better position of Boro women in the society, especially in the field of culture. Besides all hurdles set by the society, a Boro woman is courageous. She does not depend on anyone else. She knows who she is. She builds others up. She does not see showing emotions as a weakness. She follows her intuition. She does not overthink everything. Hence, she is strong enough to help the society. There is little literature on Boro women. The available literatures are primarily for implementation of various government projects and policies. Moreover, defined patriarchal social structure, Boro and other tribal women in Assam are subject to traditional social pyramid, which does not allow women to enjoy equal social status as compared to their male members of the family. They are not encouraged to engage in active social life like leadership, politics, entrepreneurship, etc. Importance of women's participation in any decision-making body is always neglected. In order to bring awareness regarding their rights among the women as well as among the society since 1980s, some organizations have been formed by Boro women. The traditions, customs, folk
floors, folktales, etc. are regarded as a great and legitimate source of any literary and cultural heritage of Boro society. And the carrier and preserver of this heritage are the women. Therefore, if women are not empowered properly, we cannot think of a developed society. Society means both the man and women together. If we neglect the women, our society would be like a paralyzed person. Women or mothers are the world of family. A home can survive without a man, without much problem, but a home cannot survive without women. So, for the interest of our family, society, community, state or country, women should be empowered, not only by word, but by spirit and works, because progress for women is progress for all. Thank you. Dhanyavad. Now I would request Neetu to come forward with her Namaskar, madam. It is indeed a huge pleasure to be here with Mamta ma'am. Thank you so much to Sahitya Academy to have us here, who talked about the fact that empowerment is not something that we are asking for. It is a status of mind. It's also asking for an equality. It's also saying that let's have a table which is the same, this forum together to a world which will be more equal, not just for the other status, but for us together, be together to be able to make and construct a newer world. My daughter will be able to tell a very, very different story. And yet, in this story, I hope that she will have all the colors. I hope that the world that she gives to her next generation will be very, very firmly rooted in the values which is too serious, you see. An unknown Cyril Radcliffe picked up a pencil in hills and mountains. Leaders fought over where exactly this line was. The business of lines is too serious, you see. India, the promised land beckoned, trudging through dusty lanes as kafilas guarded themselves from attacks. She cracked the small hands of her 2-year-old. On to India, where they would be free. The business of nations is too serious, you see. They did not tell her of hunger and disease, of lost families and tortured daughters, of marauding mobs and languishing swords, of deadly trains and heart-wrenching cries. And then she did not want to know. She locked away her heart and threw away emotions. The business of living is too serious, you see. Suddenly, quite unexpectedly, they told her they had reached India. Rows and rows of tents, snaking queues for food and medical help, weary, hungry crowds with sunken eyes. Is this India? Is this Azadi? The business of freedom is too serious, you see. Cutting through bureaucratic red tapes, dealing with clerks submerged in the immorality of the task, she accepted enemy property in lieu of lost lands. They did not tell her of pain and grief, of agony that would settle in the core of her heart. The business of surviving is too serious, you see. The pillars grew lines, and then poles, barbed wires and concertina coils came up. Distrusting neighbors watched fondly from towers with deep hatred and cynicism. The business of existence is too serious, you see. Successive wars with a conjoined theme, each resulting in no result. Vicious fighting in the land of non-violence, flags draped over coffins, slogans rendering the air heavy. The business of patriotism is too serious, you see. Now, the business of subsisting is too serious, you see. And then, 1984, they did not tell her of anguish and pain, of suffering and angst, of endless nights with silent screams that shriek into the darkness and echo into the galleries. The pain is serious, you see.
Where is home? Where are roots? Where is land? And where are the business of hope? It's too serious, you see. The point that I'm trying to make here is basically this is exactly what women in literature, women everywhere across the world, women across various states of society bring to the table. The entire business of hope, the business of resilience, the business of strength. This strength which is an innate feeling, this strength which will never be a physical strength. This is a strength of character, a strength which is from your mental attribute, and a strength which resides within the core of every woman that I have come across. I'm sure that together you and I can harness this strength and then make a much better world, a much colorful world, a world which does not look at inequalities, a world that does not look at plateaus, a world where each one of us is able to give our very best. Thank you so much. नमस्कार। उस संदर्भ में बात करना बहुत अनिवार्य है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी हम देखा जाए तो स्त्री सशक्तिकरण की बात करना मतलब मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे चले जाते हैं जब आज 21वीं सदी में वो बात करते हैं। तो हालांकि अनिवार्यता है, लेकिन मेरा ये मानना है और आप सभी सहमत होंगे कि आदिकाल से जब से मानव संस्कृति है तब से स्त्री की बात ही नहीं, पूरे समाज का सशक्तिकरण स्त्री के योगदान बिना संभव नहीं था। पूरे समाज का सशक्तिकरण करा किया है स्त्री ने अपने कर कमलों से। और अभी मुझे गुजराती साहित्य की बात करनी है तो उसके संदर्भ में भी मुझे एक मेरा ये अवलोकन रहा है कि हम अगर साहित्य में सशक्तिकरण का एक संदर्भ यही भी है कि अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता, वो भी एक तरह से सशक्तिकरण है। और ये अभिव्यक्ति क्षमता की बात करें तो सिर्फ गुजराती साहित्य में ही नहीं, पूरे भारतीय साहित्य की सभी भाषाओं में हम अगर अवलोकन करें पीछे इतिहास में जाकर तो मध्यकाल से लेकर आज तक सभी भाषाओं में स्त्रियों का योगदान, स्त्री की अभिव्यक्ति, मैं उसे ही सशक्तिकरण मानती हूँ, क्योंकि सबसे पहले अभिव्यक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जब बात करते हैं तो पितृसत्ताक समाज में स्त्री को अपने विचार साझा करने का भी या बोलने का भी पाबंदियाँ थी। तो अभी मैं गुजराती की बात करती हूँ तो हमारा जो इतिहास है स्त्री अभिव्यक्ति का, नारी लेखन का, वो एक मध्यकाल और मध्यकाल से भी आगे भी जाए तो स्त्री तब से हमारे पास हमें एक दस्तावेज मिलते हैं, हालांकि वो लिखित रूप में ना हो क्योंकि तब मुद्रण कला या वो सब इतना प्रोग्रेसिव नहीं था, लेकिन एक मौखिक परंपरा से भी हमारा नारी लेखन हमें मध्यकाल से मिलता है। 18वीं सदी में इस्माइली सूफी खोजा स्त्री संत, सूफी नारी संत सैयदा इमाम बेगम और उनके भी पूर्वसूरी जो थे बाई बुढ़ाई, तो उनके भी मुख परंपरा से उनके लेखन मिलता है। अभी तो हालांकि 11वीं सदी के बाद वो सब मुद्रित भी हुआ है तो अभी बुक फॉर्म में भी है, लेकिन मेरा कहना ये था कि बहुत करीब 500 साल पुराना हमारा नारी लेखन का इतिहास रहा है स्त्री सशक्ति। और अभी मैं समाज के सशक्तिकरण की बात करती हूँ तो उसमें हमें मध्यकाल में एक ऐसा आप देखोगे सामाजिक सांस्कृतिक एक दस्तावेज मिलते हैं कि जहाँ जिस समय में स्त्री अपने विचार भी नहीं रख पाती थी, उस समय हमारे पास सती तोरल, लिरमा, हिरमा, सूफी संत रतनबाई, फिर मगमाबाई और बहुत सारे ऐसे सूफी संत हैं। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ बात करना चाहूँगी तोरल का, सती तोरल, रूपांदे। तो वो सतपंथ और महापंथ की जो एक आध्यात्मिक परंपरा थी उसमें मध्यकाल में आज से 400-500 साल वर्ष पूर्व ये स्त्रियाँ जो थी वो ऐसी जगह पे थी और उनकी जो उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा ऐसी थी कि उनका एक पूरा समाज जिसमें अधिकतर पुरुष वर्ग वो अनुयायी थे और उन्होंने ये सतपंथ और महापंथ उसमें जो आध्यात्मिक उन्नति के शिखर स्तर किए हैं और वो सर में
उनके जो अनुयायी गण हैं उसमें भी बहुत बड़े सूफी संत हो गए, क्योंकि एक जेसल जाडेजा वो तो डाकू था, और वो डाकू ऐसा था कि सती तोरल को अपने हस्बैंड के, वो लोग दोनों अनुयायी थे सतपंथ के, डिवोटी थे, दीक्षित थे, तो उन्होंने अपनी जो ये बहुत संत वो व्यवहारिक दुनियादारी से बहुत ऊपर उठे थे, और वो ये डाकू उसके घर में चोरी करने आता है। और तब क्योंकि वहाँ उस समय उस समाज में एक लोकवायिका है कि अगर पूरे पंथक मतलब वो पूरा एरिया रीजन पूरा, उसमें दो ही चीज बहुत अद्भुत है, एक तो तोड़ी रानी मतलब ये तोरल, और दूसरी वो उसका जो हस्बैंड है उसकी घोड़ी, तो वो चोरने आता है और उसको ले जाता है, और वो वहाँ उसको आध्यात्म दीक्षा देती है और डाकू को, और डाकू का संत में परिवर्तन होता है। तो ऐसी बहुत सारी, तो ये सशक्तिकरण की बात है, तो मुझे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ये बात करना बहुत जरूरी था। और हम जहाँ भी बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि मध्यकाल से बात करनी चाहिए। मुझे सिर्फ 15 मिनट का समय दिया था, हम स्त्रियों को पहले से बचपन से ही मर्यादा में ही रहना सिखाया गया है, तो मैं उसमें ही अपनी बात पूरी करूँगी। लेकिन मुझे ये कहना है कि मध्यकाल से लेकर आज तक हमारे पास 600-700 वर्ष पुराना इतिहास है। इतना समृद्ध और व्यापक इतिहास की बात सिर्फ 15 मिनट में करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सिर्फ मेरी बात आधुनिक और अनुआधुनिक, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न जो गुजराती साहित्य है उसकी बहुत ऊपर थोड़ी चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगी। आधुनिक और आधुनिकोत्तर काल में कथा साहित्य, टूकी वार्ता यानी कहानी और कादम्बरी, नवल कथा दोनों रूपों में नारीवादी लेखन का नूतन उन्मेष आविष्कृत हमें दिखाई देता है। और इसी कालखंड में नारीवादी सर्जकों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने दोनों स्वरूपों में अपनी कलम की समस्त सर्जक संभावना और शक्ति से उनको समृद्ध किया है। नारीवादी विचारणा की प्रभावकता और उस प्रभाव से आविष्कृत चिंतन अपने सर्जन में आलेखित करने का चलन गुजराती साहित्य में 7वें और 8वें दशक से विशेष और विशिष्ट रूप से विकसित होता दिखाई देता है। उसके बाद आज पर्यंत नारीवादी चेतना भिन्न भिन्न मुद्राएं, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण और भिन्न भिन्न आवाज से गुजराती साहित्य में रचती और बसती गई है। इन सर्जकों में आधुनिक काल में सरोज पाठक, धीरूबेन पटेल, वसु भट्ट, कुंदनिका कापड़िया, वर्षा अडालजा, इला अरब मेहता जैसे सर्जकों ने वार्ता यानी कि कहानी और नवल कथा दोनों स्वरूपों में उत्तम प्रकार की नारीवादी रचनाएं दी हैं। आगे चलकर इन सर्जकों में से अधिकांश आधुनिकोत्तर काल में भी अपनी सर्जन कर्म से सांप्रत गुजराती साहित्य को ओजस्विता प्रदान करते हैं। इनके अलावा बिंदु भट्ट, हिमांशी शीलक, मोना पात्रावाला आदि सशक्त सर्जकों से नारीवादी चेतना का आविष्कार करती हुई गुजराती साहित्य की कृतियां प्राप्त होती है। सन 1984 में कुंदनिका कापड़िया की अति चर्चास्पद नवल कथा 7 पगला आकाश में प्रकाशित होती है। स्त्रीनी यात्रा कैलाश की कारागार सुधी शीर्षक तहत लिखी गई कृति का प्राक कथन, उसमें एक विधान ऐसा है कि जो कि दुनिया में सभी असमान हैं परंतु स्त्रियां अधिक असमान हैं। इस वाक्य के मुखर और आक्रोशपूर्ण आरंभ से समस्त कृति में ये आक्रोश व्याप्त होता है। नारीवादी विचारधारा का प्रभाव और उसके चिंतन में अपने समय और परिवेश की छवि देखने का चलन इन 2 दशकों के स्त्री सर्जकों में दिखाई देता है। स्त्री की अनुभूति तथा पुरुष प्रधान समाज में स्त्री जीवन की समस्याएं तथा नारी जीवन के करुण गर्भ का आलेखन इन सर्जन प्रवृत्त लेखिकाओं का केंद्रस्थ विषय रहा है। इन सभी लेखिकाओं ने स्थूल घटनाओं से अधिक आगे बढ़कर स्त्री के आंतरमन और उसके चैतसिक व्यापारों की अभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया है और परिणाम स्वरूप इस कालखंड में नारी जीवन की समस्या का आलेखन करती कहानियां और नवल कथा का मनोवैज्ञानिक स्तर पर आलेखन संभव हुआ है। 7वें और 8वें दशक की इस नवल कथा धारा में नारीवादी लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाने वाले सरोज पाठक गुजराती साहित्य में अपने विशिष्ट सर्जन कर्म से अपनी निजी लाक्षणिक मुद्रा अंकित करते हैं।
सन 1959 से लेकर सन 1990 तक, यानी कि 40 साल के दीर्घ अंतराल की काव्य सर्जन यात्रा में 8 नवलकथा, नाइटमेयर, निशेष, प्रिय पूनम, उपनायक, टाइम बॉम्ब, लिखितन, ग्रीन रूम तथा मन नामे महासागर प्राप्त होती है। और ये नवलकथा ऐसी है कि वो जो गुजराती नवलकथा का पूरा स्वरूप नया नव निर्माण करती है। स्वरूप के संदर्भ में एक नया पूरा ट्रेंड आता है इन नवलकथाओं से। और सरोज पाठक की इसी कालखंड में 7 वार्ता संचय भी प्राप्त होते हैं, जो कि प्रेम गटाजुक आई, प्रीत बंधाणी, मारो अस्पाप मारो राग, विराट टप्पू, तथास्तु, हथेळीमा आकाश, हूँ जीवूं छू आदि समाविष्ट है। अभी हूँ जीवूं छू जो वार्ता संग्रह है उसके बारे में मुझे कहना चाहिए कि वो प्रकाशित प्रेस में थी, तब भी सरोज पाठक का देहांत हो गया और उनके देहांत के 2 महीने बाद ही वार्ता संचय प्रकाशित हुआ और संयोगवशात उसका नाम ऐसा था कि हूँ जीवूं छू, मतलब मैं जिंदा हूँ। तो सही में सरोज पाठक वो उनके सर्जक कर्म से हमारे बीच अक्षर है। उनकी 7 नवलकथाओं में से 3 नवलकथाएं स्त्री पात्र प्रधान है, अन्य 4 पुरुष प्रधान है, परंतु उनमें भी नारी चरित्रों की गरिमा और कुमारकों का एक ऊंचाई तक आलेखित किया गया है। सरोज पाठक की वार्ता रचना हो या नवलकथा कृति, उनमें नायिका आंतरमन का मन और कठोर वास्तव का धरातल, मन और बुद्धि, प्रेम और अहंकार के द्वंद्व में जूझती और अंत में दाम्पत्य जीवन के लिए समाधान करती, समर्पण करती पाई जाती हैं। उनकी कृतियों में चरित्र के 2 अंतिमों पर विरोधाभासी पहलू चरितार्थ होते हैं। मैंने सभी एक आलेख दिया है और थोड़ी थोड़ी सभी की बात की है, लेकिन मुझे लगता है समय बहुत कम है, लेकिन मुझे 2 बातें रखनी है, वो मैं 2-3 मिनट में ख़त्म करूँगी। दूसरे हमारे बहुत वर्सेटाइल सर्जक हैं धीरूबेन पटेल। धीरूबेन पटेल की वासना अंकुर, शिमड़ाना फूल, वमड़, आगंतुक के लिए उनको साहित्य अकादमी का पारितोषिक भी मिला है। लेकिन आगंतुक की बात मैं यहाँ इसलिए नहीं करना चाहूँगी कि मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट स्थल है वो नारीवादी चेतना का आविष्कार हो, जिसमें चरितार्थ होता है, तो इसलिए इनकी ये 3 नवलकथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। शिमड़ाना फूल, वमड़, वासना अंकुर और आंधड़ी गली। बहुत सुंदर नवलकथा है, लेकिन वो उसका मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगी, यहीं छोड़ देती हूँ। उसके आगे वर्षा रह जाती मारेपण एक घर होए। मारेपण एक घर होए मतलब मेरा भी एक घर हो कोई, वो नवलकथा मुझे बहुत 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 इस हिंदी साहित्य की उषा प्रियंवदा जी की ममता जी है यहाँ, तो उषा प्रियंवदा जी की 55 खंबे लाल दीवार, तो उसका उसके विषय वस्तु, उसकी कथा संरचन, वो सब टेक्निक्स उसकी वो सबसे इतनी मिलती जुलती है कि उसका तुलनात्मक अध्ययन भी हो सकता है। और उसके बाद वर्षा अडालजा की भी सिस्टर है इला आरब मेहता, उनकी एक बहुत अच्छी नवलकथा है 32 पुतड़ी निवेदना। और बस 32 पुतड़ी, उसके आगे फिर बिंदु भट्ट है, मोना पात्रा वाला है, बहुत सारे स्त्री सर्जक है। लेकिन वहाँ यहाँ मैंने पेपर बहुत रिसर्च पेपर तैयार किया है, किसी को अगर रस है, रुचि है तो मैं दूंगी, लेकिन मैं यहाँ वो सब बातों में नहीं जाती हूँ क्योंकि दूसरे भी वक्ता है, साथी वक्ता, उनको अन्याय होगा। तो बिंदु भट्ट की एक नवलकथा का उल्लेख और इला आरब मेहता की 32 पुतड़ी निवेदना, उसकी बस 2-3 मिनट में बात करके मैं अपनी वाचा को विराम दूंगी। तो गुजराती नवलकथा साहित्य में बिंदु भट्ट का नाम और काम दोनों उल्लेखनीय है। 1992 में प्रकाशित मीरा याज्ञनिक की डायरी जैसी नोंदनीय लघु नवल के बाद दीर्घ अंतराल में हमें मिलती है अखे पातर। अखे पातर, इसका भी मैं यहाँ जिक्र इसलिए करूँगी कि उसको भी साहित्य अकादमी का पारितोषिक मिला है। अखे पातर वो कोलोक्वियल वर्ड है, लेकिन उसका मूल शब्द है अक्षय पात्र। अक्षय पात्र मतलब ऐसा पात्र कि जिसमें से कितना भी प्रसाद निकालते जाओ लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता। और हम हर स्त्री का जीवन एक अक्षय पात्र है, उसमें वो अनुभव विश्व में इतनी सारी चीज़ें हैं, वो इतने सारे बोध है, इतनी सारी प्रसाद है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता। और उसी एक नारी की बात है जो सिर्फ कंचनबा की बात नहीं है, मेरी आपकी यहाँ बैठे सभी स्त्रियों की बात है। इसीलिए अंत में नवलकथा की नायिका कंचनबा अपने समस्त जीवन को
कि मैं जिए और किए अनुभवों के संदर्भ में कहती है कि मेरे लिए यह अक्षय पात्र जीने का, अक्षय पात्र का कौन सा, उनका अनुभव विश्व, उन्होंने जो जिया है वो एक अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र जीने का, जूझने का आधार है। भले यह काल का अग्नि मेरा इम्तिहान लेती रहे। यहाँ काल के अग्नि के साथ साथ वो हमारे बैक हमारी नवीन में वो पड़ा है सीता की अग्नि परीक्षा, वो उसका भी एक संदर्भ हम देख सकते हैं। भले काल का अग्नि मेरा इम्तिहान लेती रहे, मेरी जीवन धारा अभी अस्खलित है और उसकी वजह है यह कटोरा जिसे मैं देखती हूँ तो मेरे पैर जमीन पर टिके रहते हैं। और ये बहुत सही बात है कि जब हम स्त्रियाँ बहुत मुश्किलों का अनुभव करती हैं और कभी ऐसी मुश्किल परिस्थिति आती है कि हमको लगता है कि इसमें से कैसे हम पार होते हैं, और तब हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपने पीछे जीवन की सच्चाइयाँ और हकीकत, और हमने जो जो विसंगतियाँ झेली हैं, तो फिर से हमें वो जीने का, जूझने का बल मिलता है। तो वो वही कहती है कंचनमा। और अंत में 2 मिनट में बात करना चाहूँगी इला मेहता कृत 32 पुतली निवेदना। वो 32 पुतली निवेदना मतलब वो उसमें एक मीथ है। मुझे लगता है कि ये 32 पुतली हमारे गुजरात में एक बहुत समृद्ध परंपरा है। 32 पुतलीनी वार्ता वो कथा है कि और वो मुझे लगता है सभी, क्योंकि ये मूल कथा सरित सागर से पूरी परंपरा आई है। तो राजा विक्रम का जो वारिस है भोज, वो राजा विक्रम के बाद सिंहासन ग्रस्त आरूढ़ होने जाता है, तब वो जो उस सिंहासन है उसमें कार्विंग है, उसमें पुतलियाँ हैं। तो एक पुतली उसमें से जागृत होती है और उसको बोलती है कि तू अभी मत बैठ, पहले तू कथा सुन राजा विक्रम के शौर्य की, उसकी बहादुरी की, उसके चरित्र की। अगर वो कथा तुझे लगता है कि तू उस ऐसा तेरे में शौर्य है, ऐसी बहादुरी है, तेरा ऐसा चरित्र है, तभी तुझे बैठने का अधिकार है। तो ये पूरी बात है। तो उसका मीथ लेके उन्होंने 32 पुतली निवेदना की बात की है। और वो 32 पुतलियाँ और कोई नहीं, वो विक्रम और कोई नहीं, वो विक्रम है हमारा समाज, पितृसत्ताक समाज, और वो 32 पुतलियाँ है मैं और आप। तो उसमें हम विक्रम बेताल की ख्यात वार्ता की पूर्व भूमिका में राजा भोज और उसके सिंहासन में अंकित पुतलियों की कथा के रूपक से नवल कथा का नामकरण यथार्थ रूप से लेखिका ने किया है। वह प्रतीकात्मक है। सिंहासन की पुतलियाँ अकर्मणीय हैं, वह सिर्फ सजकर विक्रम के पराक्रम की साक्षी बनकर उसकी वीर गाथा गाने में प्रवृत्त है। यह सीधा संकेत हमारे पितृ समाज व्यवस्था में स्त्री का स्थान और वह स्थान जनित अकर्मणीयता की ओर है। जीवन की तरह सर्जन में भी हो सके उतना सत्य, ये नायिका है, वो बहुत अच्छी लेखिका है, लेकिन उसे एक मंडल है और जिसका करता धरता एक स्वामी है और उसे लिखने के लिए बुलाते हैं, वह नाटक करना है। लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो प्रतिभावंत स्त्री है, लेकिन उसकी वो पॉपुलर है और उसकी लिखी हुई कथा से जो फायदा होगा वो शास्त्री जी को होगा। लेकिन वो अंत में बिना किसी को बताए वो अंत बदल देती है और वहीं एक पराकाष्ठा आती है। और बस उसके वो अंत कैसा है, राम के वनवास की बात है और सीता की अग्नि परीक्षा की बात है। तो वहाँ बस उसकी 2 डायलॉग में बात करके ख़त्म करूँगी। वह कहती है समग्र नवल से निरूपित मंडल की स्त्रियों की वो कहती है, कई कहती है दशरथ को, राम का वनवास नहीं मानती, लेकिन कहती है हाँ मैं मंथरा हूँ, मैं मानती हूँ वनवास, मुझे ये इस महल से मुक्त कर दो, मेरे सुंदर चेहरे को जला के कोयला कर दो, ताकि उसके शिकार से कोई भी पुरुष लालायित न हो। स्त्री की छाती चीरकर अंदर बैठा हुआ मानव आत्मा दिखाओ इन मांसभक्षी जानवरों को और कहो कि यह स्त्री है, मांस का टुकड़ा नहीं। और अंत में सीता लक्ष्मण को कहती है कि मैं जाऊंगी अपने मार्ग पर, वह प्रेम करता है अपने पौरुष को, मतलब राम प्रेम करता है अपने पौरुष को, और तुम्हारी खींची हुई रेखा पर पार करने की मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि अपने लिए सुवर्ण मृग का शिकार मैं खुद ही करूंगी। और इस तरह गुजराती नवल कथा में सरोज पाठक, धीरूबेन पटेल, वर्षा अडालजा, बिंदु भट्ट जैसी स्त्रियों की सर्जकों की रचनाओं में नारीवाद सहज रूप से आविष्कृत होता है। उनकी रचनाओं में नारी
चेतना पश्चिमी नारीवादी विभावनाओं को चरितार्थ करने के वृथा प्रयास में नहीं, परंतु भारतीय समाज में स्त्री जीवन के विविध पहलुओं, उसकी समस्या, उसके अंतर्मन की अनुभूति और अवस्था को अभिव्यक्त करने के आशय से रची गई है और यही उचित रूप से नारी चेतना का आविष्कार करती है, जिसमें वास्तव में भारतीय नारी जगत का मनोद्वंद केंद्रस्थ है। अंत में मेरी अत्यंत प्रिय सर्जक एलिस वॉकर की कविता के साथ अपने विचारों को विराम देना चाहूँगी। एलिस वॉकर अपने ग्रंथ इन सर्च ऑफ अवर मदर गार्डन में कहती है, जो कि सिस्टरहुड की संकल्पना से आधारित है, और कहती है, मेरी बहन, तेरा हाथ मेरे हाथ में लेकर आज देती हूँ एक वचन कि आज के बाद तेरी प्रत्येक लड़ाई में तू अकेली नहीं होगी। धन्यवाद। मैंने देखा उन्होंने कितने अच्छी तरह से विषय को विस्तार दिया। अब मैं संताली लेखिका रानी मुर्मू को बुलाती हूँ। संताली लेखन ने कई बार हम लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि वहीं से हमने निर्मला पुतुल और समझिए कि कितनी और है, जसिंता केरकट्टा, इन सब के नाम हमने जाने और देखा कि कैसे वो साहस के साथ अपनी बात कहती है। तो देखते हैं रानी मुर्मू जी को क्या कहना है। जोहार। सबसे पहले यहाँ उपस्थित साहित्यकार, लेखक, लेखिकाएं, कवि, कवयित्री और भाषा प्रेमी को मेरा नमस्कार, गौड़ और जोहार। आज मुझे साहित्य अकादमी की तरफ से साहित्य एवं स्त्री सशक्तिकरण विषय पर बोलने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं साहित्य अकादमी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। महिला सशक्तिकरण और संथाली साहित्य में भारत में नारीवादी लेखन की कोई परंपरा नहीं रही है। हालांकि प्राचीन काल से ही कई प्रमुख महिलाओं का उल्लेख जरूर हुआ है, परंतु स्त्रियों को एक दार्शनिक, सामग्री और विदुषी तक ही सीमित किया गया है। पश्चिम के देशों में भी नारीवादी इतिहास लेखन पुराना नहीं है, क्योंकि इतिहास लेखन में पूरे संसार में पुरुष प्रधान ही रहा है। इतिहास के किसी भी भाग में, चाहे प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे पश्चिम इतिहास या भारतीय इतिहास हो, पुरुषों का ही इतिहास रहा है। इतिहास लेखन में महिलाओं की बहुत सीमित जानकारी उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि यह इतिहास के पन्ने से लगभग गायब रही है। नारीवादी इतिहास लेखन को हम 19वीं सदी से मान सकते हैं, क्योंकि यूरोप में ये जोर पकड़ने लगा कि प्राचीन काल से आज तक समाज में नारी की भागीदारी का इतिहास लिखा जाए। समकालीन यूरोप, एशिया तथा अमेरिका में उपनिवेशक तथा अपने अधिकारों के खिलाफ महिलाएं आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। मेरी विलस्टोनक्रफ्ट ने 1792 ईस्वी में अपनी पुस्तक विडकेशन ऑफ द वीमेन प्रकाशित की थी। 20वीं सदी में नारीवादी आंदोलन में एक नया मोड़ आया, जब 1919 ईस्वी में अमेरिका में स्त्रियों को मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसी अवधि में भारत में पूर्ण जागरण काल का उदय हुआ था, जिसमें समाज सुधारकों ने महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। भारतीय महिलाओं को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाएं शामिल हुई। इस प्रकार भारत में आंदोलन से नारीवादी विचारधाराएं और लेखन कार्य सक्रिय होने लगे। संथाली इतिहास या साहित्य लेखन पुरुषवादी ही रहा है। संथाली इतिहास के कालखंडों में हम देखते हैं कि
जितने भी संथाली लेखकों ने इतिहास या साहित्य को लिखा है वह पुरुष प्रधान ही रहा है, चाहे बिरसा मुंडा इतिहास हो, तिलका माझी का या फिर वीर सिद्धू कान्हू का ही इतिहास क्यों ना हो। इन सारी विद्रोह में महिलाओं की सूर्य गाथा को इतिहास के पन्ने से गायब कर दिया गया है। संथाली साहित्य लेखन में महिला लेखिकाओं की शुरुआत हम 90 के दशक से मान सकते हैं। संथाली लेखिकाएं अब अपनी लेखनी के माध्यम से इतिहास के पन्ने में जगह ढूंढ रही है। वर्तमान समय में संथाली साहित्य का सृजन लगभग 6 लिपियों में किया जा रहा है। संथाली साहित्य की अपनी एक प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन लिपिबद्ध ना होने के कारण संथाली साहित्य व्यापक स्तर पर नहीं फैल सका। संथाली साहित्य अपना सुख दुख, अपनी पीड़ा, साम्राज्यवादी शोषणकारी शक्तियों का विशेष विरोध लगभग साहित्य की सभी विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि के माध्यम से कर रहा है। आदिवासी समाज पर लिखी गई कविताएं तथा लोकगीत इनके ऊपर होने वाली जुल्मों एवं उपलब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों द्वारा जिन मुद्दों को लेकर संथाली महिलाएं लेखिकाएं साहित्य और का सृजन कर रही हैं। साहित्य की अवधारणाओं के माध्यम से आज हम संथाली कविता, कहानी तथा नाटक के इतिहास पर नजर डालें तो उसमें हमें आरंभिक काल से ही स्त्रियों की समस्याओं के साथ साथ उनके द्वारा दबी जाने वाले प्रतिरोध की अभिव्यक्ति मिलती है। दुनिया भर में आज स्त्री समाज अपने स्वतंत्रता अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि कभी भी स्त्री को स्वतंत्र प्राणी के रूप में पहचान नहीं मिली। वह हमेशा पुरुष के अधीन रही है या तो पुरुषों के द्वारा बनाए गए ढांचे में रही है। इसी ढांचे को तोड़ने के लिए वह निरंतर प्रयास कर रही है। स्त्री के इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करती निर्मला पुतुल मुर्मू की एक कविता, चे आमे बड़ाया कोड़ा खन भिनंग मी तिरलहा एकला ओड़ा आ जाति खन अलग मी तिरलहा उदो ले दड़िया सिदाय खन आजा ओड़ा पान तेरे मिनाए मी तिरलह कोना उपरुम। हिंदी अनुवाद, क्या तुम जानते हो पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी जमीन के बारे में बता सकते हो? तुम बता सकते हो? सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री को उसके घर का पता? एक स्त्री की सारी आशाएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं, सब कुछ पुरुष समाज के भूगोल में और कुछ नहीं बल्कि एक स्त्री की तन को कैसे प्राप्त कर लिया जाए, इसी लक्ष्य पर निर्मला पुतुल मुर्मू अपने समाज परिवार को सचेत करती हुई एक कविता, पंजाब में चुड़का सोरे नुआ को खोन बांचा में नुआ खोन अमा अतु नेल को अमा रचा रेगे दुरुक कते अमा बिनाव हंडीते आमगे न्यू बुल ओचो कते खिलोट कान को बकन कुड़ी साव चुटी लगाओ बहनाते सारा घड़ी बेरेट चला कान तकाय ठेन उरुम नाय में चुड़का सोरेन मुने आम रे आयो सावते हपे हपे ते गपल मरा कान मेस को एक थाने कथा कथाते। हिंदी अनुवाद, इसे बचो चुड़का सोरेन, बचाओ इसमें डूबने से अपनी बस्तियों को। देखो तुम्हारे ही आंगन में बैठे तुम्हारी हाथों से बनी अड़िया तुम्हें पिला पिला कर कोई कर रहा है, तुम्हारी बहनों से ठिठोली बीड़ी सुलगाने के बहाने बार बार उठकर रसोई में जाते। इस आदमी के मनसा पहचानो चुड़का सोरेन। संथाली आदिवासी पितृ सत्तात्मक समाज है। स्त्री जीवन के सारे मापदंड पुरुषों द्वारा गढ़े जाते हैं। जो स्त्री इस मापदंड का निर्वहन बखूबी करती है वह आदर्श नारी है।
हम अक्सर सुनते हैं कि महिलाएं अधिक स्वतंत्र होती है, पर स्त्रियों का कार्य विभाजन, वस्तियाँ तथा पराये घर की समझी जाती है। लेकिन आज स्त्री समाज इस परिभाषा को प्रश्नांकित करती हुई डॉक्टर दमयंती बेसरा को एक सशक्त महिला के तौर पर समझा जा सकता है। इनकी पहली कविता एथोलॉजी ओनोलियर 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1994 ईस्वी में जीवी झरना या एक महिला संथाली लेखिका द्वारा लिखित और प्रकाशित पहली रचना है। इसके लिए ऐश्वा से वर्ष के अवे पुरस्कार मिले। हालांकि उड़िया और संथाली दोनों भाषाओं में कविता और निबंध लिखना जारी है। वर्ष 2009 में संथाली लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा वर्ष 2020 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। इनकी कविता से एक अंश, कुड़ी का नाम आमदो कड़मी दोम बांकान, सेंगेल का नाम आमदो कोयला दोम बांकान। हिंदी अनुवाद, नारी हो तुम नौकरानी नहीं, आग हो तुम कोयला नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में नारी की महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरी पंक्ति में जोबा मोमू का नाम लूंगी। वे संथाली कविताएं, कहानी और अनुवादक है। संथाली साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2017 में संथाली कहानी ओनोल बहा के लिए संथाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके अलावा कई राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय साहित्य सम्मान से सम्मानित है। इसके द्वारा लिखित चावरा भावरा कहानी में एक स्त्री को सुहागन होने का एहसास दिलाती है, तो वही दूसरी ओर स्त्री को एक परिवार के अंदर तक ही सीमित होने का बताया गया है। जब राजा बिना बताए शिकार करने जंगल जाता है और वह रात को रास्ता भटक कर शेर के जाल में फंस जाता है, तब राजा चावरा भावरा को बुलाना शुरू कर देते हैं। चावरा भावरा पालतू कुत्ता ने मिलकर उस शेर को मार डाला। राजा धीरे धीरे घोड़े के साथ उस झाड़ी से बाहर निकल गए और मरे हुए शेर को देखकर अपने चावरा भावरा को प्यार से पुकारने लगे। इसके बाद सभी पहाड़ों को पार कर घर लौट आए। घर आकर राजा ने रानी को घटित हुई पूरी घटना सुनाई। रानी यह जानकर अति प्रसन्न हुई। उसने चावरा भावरा को बहुत प्यार किया एवं खाने को भी दिया। रानी समझ गई कि चावरा भावरा के कारण ही राजा जिंदा घर लौट आए हैं। नारी प्रधान आधारित कविता तुवादारो लेखिका कवयित्री यशोदा मुर्मू की कई पुस्तक प्रकाशित है। उनकी हर कविताओं में नारी के सुख दुख आशा निराशा के बीच अपने को तलस्ती कविताओं में स्पष्ट झलकती है। यह कविता के माध्यम से स्वयं प्रश्न और जवाब ढूंढती है। धरती रे जनामताम चालो एमा जीविता मोने जीवी आलोम कहीं तीर लगो नाम। इन पंक्तियों के माध्यम से वह कहती है कि औरों के जैसे ही धरती में जन्म लिए हो और सृष्टिकर्ता ने तुम्हें जीवन दिया है। स्त्री होने पर खुद को हीन मत समझना, क्योंकि स्त्री से ही पुरुष पैदा होते हैं। मैना टुडू संथाली साहित्य में एक प्रख्यात लेखिका है। उन्होंने संथाली डिक्शनरी मार्शल डहर जैसे कई पुस्तकें प्रकाशित की है। उन्हें साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली से उनकी कविता मार्शल डहर के लिए युवा पुरस्कार 2017 में प्राप्त हुआ। उन्होंने विकिपीडिया जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में संथाली महिलाओं को सशक्त और भाषा को विकसित करने में बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित किया है। वे आयो अड़ान ई पत्रिका के संपादक थे। आयो अड़ान संथाली ई पत्रिका विशेष रूप से संथाली महिलाओं लेखिकाओं के लिए है, जो त्रैमासिक ऑनलाइन होती है। उनके द्वारा लिखित कविताओं में से एक अंश
Ayo baba kolere janamo amdo tare dorre maha muhe leka sitara ka sin chando leka amdo kunami chando tete marsal leka। नारी जीवन को एक प्रकाश से उजाला की ओर तुलना की गई है, जो पेड़ के टहनी में फूलों की कली की तरह माता पिता की गोद में ही बड़े होते हैं। उगता हुआ सूरज की जैसे पूर्णिमा की रात में रोशनी देने वाली होती है। मेरे द्वारा लिखी गई कहानी रेंगे भूख। इस कहानी में डुमनी का परिवार बहुत ही गरीब और सरकारी सुविधाओं से वंचित पहाड़ी इलाकों में रहता है। उसका पति दुबराज लकड़ी काटते समय चोटिल होने के कारण घर चलाने में असमर्थ था। डुमनी 8 माह के बच्चे को गमछी से पीठ में बांधकर लकड़ियां चुनकर शहर की तरफ बेचने निकल जाती है। शहर के नजदीक पहुंचते ही बच्चा भूख से रोता है और डुमनी भी भूखे पेट होने के कारण स्तनपान कराने में असमर्थ होती है। इस कारण रास्ते के पास के घर से एक कटोरी दूध लेकर पिलाती है और लकड़ियां भी उसी घर के लोगों को बेच देती है। उसके बाद अपने घर की ओर चली जाती है। कठिन परिस्थितियों में भी डुमनी घर चलाने में सक्षम है। पति के साथ बच्चे और घर को भी संभाल लेती है। संतान समाज की स्त्रियों का जीवन तथा उचित सभ्य समाज के संपर्क में आने के बाद अत्यधिक द्रुण हो गया है। जहां संताली स्त्रियां पहले स्वतंत्र जीवन जीती है, सभ्य समाज के संपर्क में आने के बाद उनको भी यौन सुचिता, अंधविश्वास तथा नशाखोरी छीनकर उनको महानगरों में ले आया। कम पैसे में अधिक श्रम करने वाला मशीन के रूप में पहुंचा रहे हैं। संताल और आदिवासी स्त्रियों पर इस प्रकार के अत्याचारों को संथाली साहित्य में केंद्रीय स्थान मिला। कविता नहीं, वर्ण कहानी, उपन्यास, नाटक सभी विधाओं में आदिवासी स्त्रियों को वे सारी समस्याएं, अशिक्षा, अंधविश्वास, यौन शोषण, गरीबी, हिंसा, स्वास्थ्य के मुद्दे को उठाया गया है। ये ऐसे प्रश्न जिनको सभ्य समाज ने कभी खुद नहीं उठाया, ना ही इन प्रश्नों को उठने दिया। संथाल एवं आदिवासी समाज इन तथाकथित सभ्य समाज के लोगों के तर्कों का न सिर्फ प्रतिरोध कर रहा है, बल्कि उनको प्रश्नांकित भी कर रहा है। धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद। और आज की आखिरी वक्ता उर्दू की आलोचक है हिना अफसाना। नाम में अफसाना है लेकिन अफसाना नहीं लिखती है, अलग तनकीद करती है। तो आज ये हमें बताएंगे अपने विचार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सदर मोहतरमा ममता कालिया साहबा, ख़वातीन व हज़रात, और अब चूँकि मैम ने कह ही दिया है कि आखिरी वक्ता तो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो कहिए कि मैं चंद लफ्ज़ों में गुफ्तगू करके बात को ख़त्म कर दूं, और या फिर आप इत्मीनान से मुझे सुनेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब इस टेक्निकल सेशन में वही लोग हैं जो टेक्निकल हैं, अदब को लेकर टेक्निकल हैं, और इस बज़्म में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब शीन काफ निज़ाम साहब की। शीन काफ निज़ाम साहब एक शख्स नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरा इदारा है, एक अंजुमन है, और मेरे ख्याल से इस बस में उनकी मौजूदगी मेरे लिए काफ़ी है। सर दुआओं से नवाजें। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ साहित्य अकादमी के सचिव राव साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। बिना किसी तमीज़ के अपनी बात को शुरू करती हूँ। मेरे पेपर का उन्वान है ख़वातीन अफसाना निगार 19वीं सदी के निस्फ आखिर से। दुनिया की तारीख पर नजर डालें तो हर छोटी बड़ी तहरीक के पस मंजर में सिन्फ नाजुक का दस्ते अमल कार्य फरमा है,
बज़ाहिर वह मंजर आम पर नहीं आती, लेकिन हर तहरीक में इसका असर जारी और सारी है। जिंदगी के हर शोबे में औरत का दखल रहा है, यूरोप हो या एशिया, अरब हो या अजम, आलमी सतह, सकाफत, इल्म व हुनर या फिर अदब, हर शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इब्तिदाई ज़माने में औरत और मर्द का रिश्ता बराबरी का था। वो इब्तिदाई ज़माना याद कीजिए जब मादरी निज़ाम कायम था, लेकिन समाज जैसे जैसे इर्तिका की मंजिलें तय करता रहा, वैसे वैसे औरत अपनी असल मसावियाना हैसियत खोती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता मर्दों का इन्हिसार बढ़ता चला गया। नतीजे के तौर पर औरत महकूम हो गई और पिदराना निज़ाम कायम हो गया। मर्दों का तसल्लुत इस हद तक बढ़ा कि जबान बंदी को औरत का वक़ार समझा जाने लगा। यानी औरत अगर खामोश रहे तो ये औरत का वक़ार है। मेरे ख्याल से ममता काले मैम यहाँ पर बैठी हैं, साहित्यकार हैं, उनके जहन में बड़े घर की बेटी आ गई होगी मुंशी प्रेमचंद की। सोफोक्लीस ने कहा कि खामोशी औरत को मुनासिब वक़ार अता करती है। अदब की दुनिया में कदम रखना तो दूर, औरत को अपने एहसासात, अपने जज्बात का बरमला इजहार करना भी मायूब समझा गया। मगर वक्त ने करवट ली। 19वीं सदी तक आते आते तालीम को फरोग और मुख्तलिफ तहरीकों की मिली जुली आवाज़ों ने मर्दों की बालादस्ती के बावजूद औरत ने अपनी काबिलियत, लियाकत का लोहा मनवा ही लिया। हिंदुस्तानी अदब भी इससे अछूता न रह सका। औरत फितरतन किस्सा गो होती है। अपने बच्चों को असली या फर्जी किस्से कहानियां सुनाना औरत का बेहतरीन मशगला है। ये औरत माँ हो, दादी, नानी, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कुदरत ने औरत को उम्मुल क़सस कहा है। मगर ये अजीब बात है कि अगर यही औरत किस्सा कहानियां लिखती है तो इसे बुरा समझा जाता है, मायूब समझा जाता है। किश्वर नाहिद कहती हैं, नानी अम्मा कहानी सुनाए, इस रवायत को हर नए पुराने ने माना, मगर नानी अम्मा खुद अपनी कहानी लिखे, इस पर नए और पुरानों ने तेवर बदले, त्योरियां चढ़ाई, उंगलियां उठी, फसाने के फसाने बने, इज्जत को बट्टा लगा, घर की बात दहलीज से बाहर निकली, आंखों देखी कानों ने सुनी, लफ्जों का लिबास पहनकर बेनकाब हुई। औरत का लिखना मजहबी और माशरफी रसूम के साथ रुसवाई का सबब था, मगर औरत के अंदर अपनी शिनाख्त कायम करने की तड़प और खुददारी ने इसे उकसाया। अब वो अपने अंदर छुपे हुए सवालों का जवाब चाहती थी। 19वीं सदी के आखिर से औरतों के लिखने की इब्तिदा किस्से कहानी से हुई। ख़वातीन कहानीकारों में अकबरी बेगम, मोहम्मदी बेगम, सुगरा हुमायूं, खातून अकबर, अब्बासी बेगम, मिसिस अब्दुल कादिर और नज़र सज्जाद ज़हीर काबिले जिक्र हैं। और यही वो ख़वातीन हैं जिन्होंने ख़वातीन को हौसला और एतमाद दिया। औरत की आवाज़ की गूंज रसाई में सुनाई देने लगी। अब ख़वातीन की खासी तादाद निकलकर बाहर आई। औरत के एहसासात, जज्बात और मसाइल फन में ढलकर उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ में बिखरने लगे। मज़कूरा ख़वातीन इस वक्त मर्द हजरात की मुक़ल्लिद थी, यानी मर्दों की को फॉलो कर रही थी, मगर इनके अंदर की बेचैनी और कश्मकश को साफ महसूस किया जाता था। वो चार दीवारी की कैदबंदियों को कबूल नहीं कर पा रही थी और नतीजे के तौर पर गूदा का लाल जैसे अफसाने मंजर आम पर आने लगे। इन ख़वातीन के कलम के जरिए घरेलू जिंदगी के बहुत से मसाइल सामने आए, मसलन बचपन की शादी, मर्दों की दूसरी शादी, बेवा औरतों का दर्द वगैरह इनका मौजू बना। इसके बाद का दौर इन ख़वातीन अफसाना निगारों से एक कदम आगे का दौर था। अब ख़वातीन मर्द हजरात की पैरवी नहीं कर रही थी, उनकी इस्लाही और मकसदी मिशन से बगावत करके उन सवालों के जवाब चाहती थी जो इनके दिलो दिमाग में कौंध रहे थे। इनके जहन की इस कश्मकश और तसादुम ने इन्हें ज़माने के रहबरों से सवाल करने पर मजबूर कर दिया। रूमानी तहरीक के ज़रिए से बहुत सी कहानियाँ वजूद में आई। इसमें एक कहानी है बीमारी गम। इस अफसाने में हिजाब इम्तियाज अली के बाग़ियाना तेवर साफ महसूस किए जाते हैं। कोट किया है, अल्लाह, क्या मशरिकी लड़की महज इसीलिए पैदा हुई है कि वो दूसरों की खुशियों पर भेंट चढ़ती रहे? अल्लाह, क्या मशरिकी लड़की महज इसीलिए पैदा हुई है कि दूसरों की खुशियों पर भेंट चढ़ाई जाए? क्या इसे खुद अपनी जिंदगी के मामले में दखल देने का इख्तियार नहीं
किधर है वो रिफॉर्मर जो कौम के आगे लंबी लंबी तकरीरें करते और बेहूदी कौम का तराना बड़े जोर शोर से गाते हैं, स्टेजों पर खड़े होकर अपने सीने पर हाथ रखकर कौमी दर्द जताने वाले रिफॉर्मर किधर हैं? वो गिरेबानों में मुंह डालकर देखें कि उन्होंने अपनी माओं के लिए क्या किया, लड़कियों के लिए क्या किया जो कल कौम की माएँ बनने वाली हैं। क्या इनका हमदर्द और कौम के इश्क से लबरेज दिल मजलूम लड़कियों की आह से थर्रा नहीं उठता? क्या इनके तमाम हमदर्दी तमाम दर्द महज पर रिजाल ही तक महदूद है? वो फिर ये बुजुर्ग किस मुंह से कौम के इमाम बने फिरते हैं? फिर वो क्यों इस नाम से मंसूब किए जाते हैं? क्या वो औरत को कौम से खारिज समझते हैं? क्या कौम सिर्फ मर्दों के लिए ही है? ए खुदा, इन बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इनसे इतना भी ना हो सका कि हमको जिंदगी के इस नाजुक मसले में राय देने का इख्तियार दे देते जिस पर हर मर्द और औरत की आइंदा खुशियों का इन्हिसार होता है। अनकोट। अब ये चिंगारी धीरे धीरे शोला बन रही थी, बगावत की लहर तेज हो रही थी। जमाने में अंगारे वाली रशीद जहां मंजर आम पर आ चुकी थी। रशीद जहां के खिलाफ फतवे भी जारी हुई, मगर रशीद जहां चूंकि पेशे से डॉक्टर थी, माशरे की सिसकती बिसूरती मजलूम औरतों ने इनसे दीवार के पीछे सौदा, छिद्दा की माँ जैसे अफसाने लिखवा लिए। रशीद जहां की औरत अपनी मुनफरिद शिनाख्त चाहती थी। 19वीं सदी के आखिर से अहद हाजिर तक अपने इल्मी वजूद को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश होती रही। अब ये कारवां चल पड़ा। हिजाब इम्तियाज अली, रशीद जहां, मिसेस अब्दुल कादिर, शकीला अख्तर, सालिहा आबिद हुसैन, सिद्दीक़ा बेगम वगैरह ज़मानी तौर पर रशीद जहां से ताल्लुक़ रखती थी। इन ख़वातीन ने जो बराह रास्त तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर हुई थी, इनमें अहम नाम था रज़िया सज्जाद ज़हीर का। रज़िया सज्जाद नर्म लहजे में अपनी बात कहने वाली ये अफसाना निगार रशीद जहां जैसी बेबाकी तो नहीं रखती, मगर इनकी अफसानवी मजमुआ अल्लाह की मर्जी रंग रोते हैं से इनका नुक्ता नज़र वाज़ेह होता है। वो औरत को खुद एतमाद, खुददार और खुद कफील देखना चाहती थी। वो औरत की माशी आज़ादी की तालिब थी। तहरीक नुस्वा और हुकूक़ नुस्वा की इमारत का संग मील रखने वाली रशीद जहां की आवाज़ की गूंज बाद में आने वाली ख़वातीन अफसाना निगारों ने साफ सुनी। औरत के बेजान जिस्म में रूह फूकने का काम अगरचे रशीद जहां ने किया और इस रूह को हयात जावेदानी देने वाली खातून अस्मत चुगताई थी। अस्मत के कलम को तलवार की सी तेजी अता करने वाली रशीद जहां है। अस्मत खुद लिखती हैं, जब गौर से अपनी कहानियों के बारे में सोचती हूँ तो मालूम होता है कि मैंने सिर्फ इनकी बेबाकी और साफगोई को गिरफ्त में लिया है। इनकी भरपूर शख्सियत मेरे काबू में ना आ पाई। मुझे रोती बिसूरती हराम के बच्चे जनती औरतें मातम करती नुस्वानियत से हमेशा नफरत थी। ख्वामखा की वफा और वो जुमला खूबियाँ जो मशरक़ी औरत का जेवर समझी जाती हैं मुझे लानत मालूम होती है। जज्बात से मुझे सख्त कोफ्त होती है। इश्क कतई वो आग नहीं जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। इश्क में महबूब की जान को लागू हो जाना, खुदकुशी करना वावैला मेरे मजहब में जायज़ नहीं। इश्क मुकव्वी दिलो दिमाग है ना कि जी का रोग। आप बीती में ही अस्मत चुगताई लिख रही। अस्मत चुगताई की हमअज़ह शख्सियत ने इन्हें एक ऐसा रंगी पैराहन अता किया जिसमें औरत की हमदर्दी, मोहब्बत, इनके मसाइल का एहसास, कैदबंदी, जिनसी घुटन, औरत की नफ्सियात शामिल है। मगर इन उन्वानात पे बेखौफ व खतर लिखना, ये इनॉग्रल सेशन में अनिता अग्निहोत्री मैम ने भी ये जुमला कहा था कि बेखौफ व खतर लिखना ये सिर्फ अस्मत का जिगर था। लिहा, दो हाथ, नन्ही की नानी, बिच्छू फुप्पी और हिंदुस्तान छोड़ो इनकी खुसूसी मिसाल है। आपको फहश निगार भी कहा गया, मगर इससे इनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने न सिर्फ जिनसी मसाइल को अपना मौजू बनाया बल्कि तहरीक नुस्वा को इस्तिकामत बख्शी। जिन्स निगारी में वाहिदा तबस्सुम अस्मत की पैरवी करती मिली, मगर वाहिदा तबस्सुम के अफसानों में वो नफासत और पाकीज़गी नहीं है जो अस्मत के यहाँ है। खदीजा मस्तूर ने रवायत की पैरवी की। इनके अफसानों की औरत तालीम याफ्ता है, सियासी शऊर रखती है, जिनसी घुटन और तबकाती तकसीम जैसे मौजू भी इनकी कलम की जद में है। हाजरा मसूर भी हाय अल्लाह, तिल ऊट पहाड़, नीलम, मेरा भाई, फिरोजा और बंदरगाह जैसे अफसानों के जरिए अदब में अपना मुनफरिद मकाम बना चुकी हैं। अफसाना बंदरगाह के जरिए वो इस दोगले मुआशरे पर काली जर्ब लगाती हैं
जहां मर्द का हर गुनाह माफ मगर औरत को इसके नाकर्दा गुनाहों की भी ऐसी सजा मिलती है कि रूह कांप उठती है। को कितने ही महीने गुजर गए इस वाक़ये को। वो समझती थी जिस तरह बड़े भाई की अय्याशियाँ सियाने हैं, ये उम्र ही ऐसी होती है, कहकर भुला दी जाएगी, इसी तरह इसके अज़्म गुनाह को भी फरामोश कर दिया जाएगा। लेकिन पगली औरत की हैसियत को नहीं जानती, औरत की हैसियत को भूल गई। औरत एक कठपुतली है जिसकी डोर समाज के कोढ़ी हाथों में है, और उन कोढ़ी हाथों में जब चुन होने लगती है तो डोर को झटके से कठपुतली नचाई जाती है। लेकिन अगर इस कठपुतली में जान पड़ जाए तो समाज का लोट पड़ा हुआ सड़ाहन जिस्म किससे दिलचस्पी लेगा। वो सोचती कि जिस तरह इसके घर वाले इसकी जवानी के तकाजों को भूल की तरफ से कान बहरे करके बैठ गए हैं, इसी तरह इस वाक़ये को भूलकर अपनी गलती को तस्लीम कर लेंगे। मगर ये महज इसका ख्याल था। इसके फरिश्ता सरपरस्तों की नज़र में इसकी ज़िंदगी पर गुनाह की जो खराश आ गई थी, भला वो कभी मुंदमिल हो सकती थी। अनकोट। अंग्रेजी और फ्रांसीसी अदब और तनकीद से वाक़ियत रखने वाली मुमताज़ शीरीन अफसाना निगार भी हैं और नाक़िब भी। आपका पहला अफसाना अंगड़ाई है। ये अफसाना माशरे की नफ्सियाती और जिनसी गुश्तन को पेश करता है, जहाँ मर्द एक शजर ममनू है। अफसानों का पहला मजमुआ अपनी नगरिया के उन्वान से शाये हुआ। मुमताज़ शीरी की तनकीदी सलाहियत ने इनके अफसानों को संजीदा और पुख्तगी अता की। मेघ मलिहार तक आते आते ये पुख्तगी वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। तक़सीम यानी बंटवारे और इज़्ज़त के मौजू पर लिखे गए अफसानों में जमीला हाशमी के अफसाने आतिश रफ्ता बनबाज खुसूसियत के हामिल हैं। औरत की रूहानी तन्हाई को इन अफसानों में जिस तरह पेश किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक खातून अफसाना निगार, एक औरत कहानीकार के लिए ही मुमकिन था। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों की औरत जज्बाती। अब यहाँ तक आते आते इस सफ़र काफ़ी बदलाव आ चुका है। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों की औरत जज्बाती और ज़हनी तौर पर ताकतवर है, जो मर्द और मर्द की दुनिया दोनों के साथ बिना झिझक कदम बढ़ा रही है। जिलानी बानो लिखती हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर ने अफसानों को औरत के ऐसे किरदार दिए जो दुनिया की तहजीब को और इनकी तब्दीलियों को समझती है। वो बाशऊर, साहिब राय और आलमी अदब और तारीख पर नजर रखती है। ऐसी औरत जो एक तरफ जिंदगी की तेज रफ्तारी में शरीक है और दूसरी तरफ अपनी जात के दुख और खानदान और माशरे के दबाव को भी सहती है। इनके अफसानों खुसूसन हाउसिंग सोसाइटी, सीताहरण, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो में हमें जिंदगी असरार खोजती हुई हिंदुस्तानी औरत के मुख्तलिफ किरदार मिलते हैं। बिलाशुबा कुर्रतुल ऐन हैदर ने अफसानों को आलमी अदब की सतह पर पहुंचा दिया और किस्सागोई के फन के साथ इंसाफ करने की पूरी कोशिश की है। तक़सीम हिंद के बाद भी अफसाना निगार ख़वातीन में ख़ास तौर पर ज़किया मशरी, बुशरा रहमान, जाहिदा हिना, खदीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर को बेहद अहमियत हासिल है। और दौरे हाजिर की अफसाना निगारों में निगार अजीम, तरन्नुम रियाज, गज़ाल ज़ैगम, नईमा ज़ियाउद्दीन, कमर जलाल, सादिक़ा नवाब ज़हर, सरवत खान वगैरह का नाम काबिल ज़िक्र है और अदब को इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस मुख्तसर जायजे से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि ख़वातीन अफसाना निगार मुसलसल जद्दोजहद के सबब इब्तिदाई मंजिल से मर्द हजरात के साथ साथ इस्लाही, रूमानी, हकीकत पसंद अफसाना लिखती आ रही हैं। वक्त और हालात तब्दील हुए तो औरत के एहसासात और जज्बात में भी तब्दीली आई। खातून अफसाना निगारों ने इस तब्दीली को महसूस किया और एक वक्त आया कि जब तालीम याफ्ता, बाशऊर और संजीदा औरत कहानियों का मौजू बनी। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में मशीनी दौर ने इंसानों को नए नए नुमानात और रंग आहंग अता किए हैं। ख़वातीन अफसाना निगार सियासी, समाजी, दहशतगर्दी जैसे नाजुक मसले पर कलम उठा रही हैं। आज की अफसाना निगार की कहानी रवायत से हटकर औरत की शिनाख्त, इसकी आज़ादी और हैसियत का मसला है। इसकी कहानी फ़न और फ़नकार की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, नफ्सियाती और जज्बाती उलझनों को पेश कर रही है। अहद हाजिर की कहानीकार
कदीम समाजी रवायात, कैदबंदी, पाबंदियाँ, कदामत पसंदी, जुल्म सितम और औरत की नाकदरी पर मातम नहीं कर रही बल्कि बगावत का ऐलान कर रही है। मगर जद्दोजहद के बावजूद ख़वातीन आज भी फरसुदा समाजी कदरों का शिकार हैं। मर्द अफसाना निगार की इस भीड़ में औरत को औसत दर्जा देकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस मुकाम पर तानीसी तनकीद के हवाले से शमसुर रहमान फारूकी ने फनकार औरत की अहमियत और मानवियत को मानते हुए कहा है, मैंने कोट किया है, मैं इस कोट को छोड़ रही हूँ, ये कहकर कि फारूकी साहब की राय से हम इत्तेफाक कर सकते हैं। हालांकि मौलवी नज़ीर अहमद, राशिदुल खैरी, प्रेमचंद वगैरह ने इस्लाह ख़वातीन के लिए बेशक बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन वो भी औरत की फिक्र की नेहा कानों तक नहीं पहुंच सके। औरत की नफ्सियाती कश्मकश, जिनसी, माशी, माशरती और घरेलू मसाइल को समझने और इसकी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रखने का काम ख़वातीन अफसाना निगारों ने ही किया है। अब ख़वातीन अफसाना निगार बहुत आगे निकल आई हैं। दौरे जदीद में इनके अफसानों में नए रंग, जज्बात, एहसासात और नफ्सियाती पहलू नज़र आते हैं जो अब से पहले नहीं थे। ये तर्ज अफसाना निगारी को नई जहत अता करता है। एक बात वाज़ेह है कि उर्दू के अदबी गलियारों में ख़वातीन से बड़ी चहल पहल है। इस मुख्तसर पर्चे में अदब के तमाम असनाफ का अहाता मुमकिन नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगी कि शायरी हो या नस्र, अफसाना, नावल, ड्रामा, खुदनविश्त, सफ़रनामा, रिपोर्टाज, हर मकाम पर ख़वातीन नुमाया हैसियत रखते हुए निस्फ बेहतर होने का सबूत दे रही हैं और उर्दू की ख़वातीन अफसाना निगारों से उर्दू अदब को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। चलते चलते मैं इतना बता दूँ आपको कि हिंदी साहित्य में भी इस समय महिला लेखन की धूम मची हुई है। एक ज़माना था जब पत्रिकाएं निकलती थी तो एक आध महिला की कहानी उसमें होती थी। अब ये होता है कि पूरी की पूरी स्पेस महिलाएं ले लेती है, एक आध पुरुष की कहानी होती है। एक समय था जब महिलाएं अज्ञात नाम से लिखा करती थी। एक अज्ञात महिला की कथा, बंग महिला की कथा, इस तरह से कहानियाँ आती थी। और अब वो धड़ल्ले से लिखती है। किसी विषय का उनके लिए निषेध नहीं है और किसी क्षेत्र का निषेध नहीं है। एक समय माना जाता था कि घर परिवार की कहानियाँ स्त्रियाँ लिखेंगी और दफ्तर की, राजनीति की, समाज की बातें पुरुष लिखेगा। अब ऐसा नहीं है। वो सारे बैरियर्स टूट गए हैं क्योंकि आज रोजगार भी औरतों के हाथ में आ गया है। कॉर्पोरेट संसार में भी औरतें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुंच गई हैं। अब तो हालत ये है कि अगर माउंट एवरेस्ट पर पुरुष चढ़ेगा तो पाएगा वहाँ पहले स्त्री झंडा लेके खड़ी हुई है। तो सवाल यहाँ पर प्रतियोगिता का नहीं है, सवाल यहाँ पर दौड़ का नहीं है। क्योंकि देखिए, हम ये मानते हैं कि लिखने का कोई जेंडर नहीं होता है। हम जब पुरुष पात्र क्रिएट करते हैं तो उस समय हम वाकई में उसको उसके जैसा बनाते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि उसके अंदर स्त्री का गुण हो सके, या ये नहीं करते हम कि स्त्री को अगर दबंग बनाना है तो उसको आदम मर्द बनाते, ऐसा नहीं करते हैं। तो रचना के संसार में मैं समझती हूँ कि ये जो जेंडर कॉन्शियसनेस है ये इतनी अधिक नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हम मनुष्य होते हैं और स्त्री और पुरुष का संसार मिलके मनुष्य बनाता है। जब एम्पावरमेंट की बात आती है, मुझे केवल एक चीज़ की ज़्यादा चिंता होती है और साहित्यकार को भी इसकी चिंता करनी चाहिए। हम सब यहाँ पर रचनाकार बैठे हुए हैं, जिस भी जुबान में लिखते हैं कि आज स्त्री के प्रति घरों में दृष्टिकोण बदला है, काम की दुनिया में थोड़ा सा बदला है, लेकिन सामूहिक हिंसा उसके लिए बढ़ी है, सड़क पर उसके लिए हिंसा बढ़ी है। यानी असुरक्षा के क्षेत्र कहाँ कहाँ हो गए अब। वो सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सोच विचार से
और समाज के परिष्कार से ठीक हो सकती है। और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेखक के ऊपर, समाज सुधारक के ऊपर, राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर, इस सब की बड़ी जिम्मेदारी है। और हम सब स्त्रियां यही कर सकती है। साहित्य की शक्ति तो हमारे पास है, लेकिन हमें इसके साथ साथ आर्थिक शक्ति की कोशिश करनी चाहिए, सामाजिक शक्ति की कोशिश करनी चाहिए और राजनीतिक शक्ति की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग लेजिस्लेचर में शामिल नहीं होंगे, जब तक हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं होगी, तब तक हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। आज तक हम लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और आरक्षण आज तक हमें 30% भी नहीं मिला, 50% की तो बात ही क्या। तो ऐसी बात है कि ये सारी चिंताएं साहित्य की भी चिंताएं हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी मीनार में बैठ के नहीं लिखते हैं, हम इसी समाज में हैं। इस समाज की जो संगतियाँ हैं कि एक तरफ स्त्री को आप इतना चढ़ा रहे हो ऊपर, और एक तरफ स्त्री को पता चला सड़क पर लोगों ने पकड़ के एसिड उसके ऊपर डाल दिया और कोई रास्ते में रुका नहीं उसको देखने के लिए, उसको बचाने के लिए नहीं रुका। ये सब हमारी चिंताएं होनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। अंत में कहती हूँ कि मेरी एक छोटी सी 4 लाइन की अपनी कविता सुनाकर, क्योंकि वो लड़की की शक्ति से संबंध रखती है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की है समझदार और संवेदनशील। वो दीवार पर लगाती है खूंटियाँ पढ़ाई लिखाई और रोजगार की, और एक दिन धीरे से दीवार के दूसरी तरफ चली जाती है। दोस्तों शुक्रिया। आज का सत्र यहाँ पर ये वाला सत्र समाप्त होता है। नमस्कार।